Yes, yes, sir. Okay. Very So, good. Yes. dear participants, I welcome you all for this today's morning session. Today we have with us Dr. Ashok Gingine sir, Assistant Professor in Education Science, School of Education, Department School of Education, Swami Raman Tirtha Marathwada University. So I welcome Dr. of Research Committee, Science College, Nanded. Welcome, sir, and please start your presentation. Okay. Thank you, sir. Okay. Yes. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, my screen is visible now. Yes, Yes, sir. Okay. Thank you. Today we will be going to discuss content of research hypothesis, characteristics of research hypothesis, content or elements of research hypothesis, foundation of research hypothesis, and which time a researcher use a research hypothesis in which research design, and types of research hypothesis, and how to test a research hypothesis. Our significantness, our find out the significantness or find out the significant level, and how to generate a research result through a research hypothesis. In this session, we cover the 15 marks as per the concern of examination views. Firstly, we discuss regarding meaning and concept of research hypothesis. Hypo and thesis means whatever may be a reason, whatever may be a tentative predictions regarding your problem, that considered as a research hypothesis. 1 minute. Yes. Generally, in survey research method and experimental research method and ethnographical research method and case study research method, research scholar was developed a research hypothesis. Generally, to find out the prediction between two or more than two research variables, to find out the impact of one depending variables on independent variables. Taranam ji, any difficulty? Please mute your side. Tumba Taranum. Generally, research variables to find out the relationship between two or more than two research variables, that is called a research hypothesis. A tentative answer of the research problem, that is called a research hypothesis. Generally, whatever may be 2, 3, 4 predictions regarding a solution, that considered as a research hypothesis, whatever may be. Generally, each and every research hypothesis that should be depend on the minimum two research variables. One is depending research variables and second one is independent variables. It is a basic need of research hypothesis, means two research variables is essential in that statement. That statement considered as a research hypothesis. General statements are different and hypothetical statements are different. In a hypothetical statement, minimum two research variables or more than two research variables, the relationship between two or more than two research variables reflect on that statement. It is called a research hypothesis. दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त घटकांचा संबंध दर्शवणारा विधान म्हणजेच परिकल्पना असं संबोधलं जातं. Isn't it? Means minimum two research variables is essential. Minimum two research variables is essential
whatever may be a format, whatever may be a relationship, you have to use in that particularly hypothetical statement. Before the experiment, whatever may be predictions of regarding experiment, regarding a research result, that prediction is considered as a research hypothesis. म्हणजे काय, हे एखादा अंदाज गृहीत धरलेलं उत्तर, दॅट कन्सिडर ॲज अ रिसर्च हायपोथिसिस. प्रेडिक्टेशन म्हणजे समजा 33 रिसर्च स्कॉलर आहेत आणि माय प्रेडिक्टेशन, माय रिसर्च हायपोथिसिस इज ओनली 25 रिसर्च स्कॉलर क्रॅक द एक्झामिनेशन्स अँड 9 research scholar are fail in a research coursework. That is my prediction. After the coursework research result hail, I will check my prediction. Means how many research scholar qualified in this group coursework in first attempt. Means whatever may be your prediction, that prediction is considered as a research hypothesis. म्हणजे तुम्ही मांडलेला जो काही अंदाज आहे, त्या अंदाजाला काय म्हणायचं, रिसर्च हायपोथिसिस म्हणायचं. आज पाऊस पडण्याची शक्यता आहे, दॅट इज वन टाइप ऑफ प्रेडिक्टेशन, इजंट इट? किंवा एक्झिट पोल, या मतदारसंघातून हा माणूस निवडून येण्याची शक्यता आहे, दॅट इज पॉसिबिलिटीज, इजंट इट? किंवा मग आता आमचे कुलगुरू आता रिटायर होत आहेत, नवीन कुलगुरू या जिल्ह्याचा येण्याची शक्यता आहे, दॅट इज प्रेडिक्टेशन, isn't it? Whatever may be your research area, whatever may be your research problem, as per as the concern of your research problem, you want to find out the solution regarding your research problem. That solution, that prediction, consider as a research hypothesis. बरोबर. म्हणजे कुठले असेल की एखाद्या समस्येचं गृहीत धरलेलं उत्तर, की sometime some illiterate farmers or illiterate research scholar was formulate a ideal hypothesis, true hypothesis or significant hypothesis. म्हणजे तुमचा अंदाज खरा असला पाहिजे, सत्य असला पाहिजे, निघाला पाहिजे, असा अंदाज तुम्हाला मांडता आला पाहिजे. Which was the foundation of research hypothesis? What was the basic abilities how to formulate a research hypothesis? Means your prediction ability, your scientific observation ability, your previous research experiences. You find out the solution regarding two or more than two factors or research variables, and your analytical abilities, your thinking abilities, so many natural abilities. These are the foundation of research hypothesis. And what type of you think? I mean, you think out of box, you think one way, you think multi ways, whatever may be your thinking level and your thinking rate, that is the foundation of your research hypothesis. म्हणजे तुम्ही कोणत्या प्रकारे विचार करत आहेत, कसा विचार करत आहेत आणि अंदाज कसा मांडत आहेत, हे परिकल्पनेचं अधिष्ठान म्हणून कन्सिडर केलं जात असतं, isn't it? Generally, explain and set of the research variables to be studied. Before the research doing, you want to analyze, you want to find out the previous research report and previous research papers, previous research scholar, how many research variables and what type of research hypothesis he used in his research, previous research. That is the foundation of research hypothesis. अगोदरच्या संशोधकांनी कशा परिकल्पना मांडलेल्या आहेत, which types of research hypothesis formulate in previous research paper. You download so many research paper, in particular your research area, your research interesting area, and analyze the previous research hypothesis, which types and which structure and which types of research variables previous research scholar was used in his research design. म्हणजे अगोदरच्या संशोधकांनी कशा प्रकारचे रिसर्च हायपोथेसिस मांडलेले आहेत, कोणत्या प्रकारामध्ये मांडणं अपेक्षित आहेत, आणि त्याचं फॉर्मॅट कसं आहे आणि स्ट्रक्चर कसं आहे हे तुम्हाला पाहावं लागतं. म्हणजे झुलॉजी असतील, बॉटनी असेल, कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट असेल, किंवा व्हॉट एव्हर मे बी युअर डिसिप्लिन, व्हॉट एव्हर मे बी युअर रिसर्च एरिया, की यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द प्रीवियस रिसर्च रिपोर्ट, कि so many research report available on website Shodh Ganga, Shodh Gangotri, and another sources are available, and so many research paper you have to download and analyze that previous research paper, which types of research hypothesis that researcher used in his research, and set a research variables.
which types of research variables you want to deal in your research process, in your research design. How many research variables and which types of research variables you want to consider in your research process. That is a basic essential factors at the time of formulating a research hypothesis. कोणकोणत्या घटकांचा आपण आपल्या संशोधनामध्ये विचार करणार आहोत आणि कोणकोणते रिसर्च व्हेरिएबल्स आणि कोणकोणत्या प्रकारचे रिसर्च व्हेरिएबल्स आपण विचार करणार आहोत हे पाहणं गरजेचं आहे. दॅट इज द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च हायपोथेसिस. की जनरली at the time of formulating a research hypothesis, basic eligibility of research hypothesis formulating, these are the two type of research variables used in each and every research hypothesis. Minimum two variables. Whatever may be more than two variables, so many researcher use in his research hypothesis, that type of research hypothesis is different. But hypothetical statement, you formulating a hypothetical statement, minimum two research variables is essential. One is depending research variables and second one is a independent research variables. म्हणजे दोन प्रकारचे चल किंवा रिसर्च व्हेरिएबल्स हायपोथेसिस मध्ये असणं गरजेचं आहे, बंधनकारक आहे. पहिला जे आहे डिपेंडिंग रिसर्च व्हेरिएबल्स. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स? व्हॉट इज द एक्झाम्पल ऑफ डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स? हाऊ टू फॉर्म्युलेट and how to evaluate a depending variables, and second one is the independent variables. How to analyze independent variables, how to consider independent variables, and what was the relationship between dependent variables on independent variables. That should be a reflect in your research hypothesis. म्हणजे रिसर्च हायपोथेसिस तयार करते वेळेस या दोन घटकांचा समावेश असणे बंधनकारक आहे. बरोबर आहे. बहीण जशी बहीण. बरोबर आहे. सय्यद जी, बघत नाही, अभ्यास करत नाही, बरोबर आहे. मोबाईल बघत नाही. that is the demerits of your teaching learning process. Sayyad, are you in class? Okay. अशोक गिनी म्हणजे हा माणूस कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर आहे युनिव्हर्सिटी. कृष्णाजी, म्हणजे ऑर्डर तुम्हाला पाठवतो, कॉन्ट्रॅक्ट वरची आहे का कोणती आहे तुम्हाला पाठवतो, लगेच गुगल ड्राईव्हच्या लिंक वर लगेच पाठवतो. ठीक आहे. हॅलो कृष्णा, आर यू इन क्लास? सॉरी सर, ते दुसरे सरांना बोलत होतो. नाही, ऑर्डर जर पाहिजे असेल तर माझ्या वेबसाईटला आहे किंवा विद्यापीठाच्या वेबसाईटला तुम्ही लगेच जाऊ शकता आणि कॉन्ट्रॅक्टवर आहे का परमनंट आहे तुम्ही लगेच पाहू शकता. विद्यापीठाच्या वेबसाईटला जा तुम्ही लगेच. सर ते चुकून विदाउट एव्हिडन्सेस यू डिड नॉट से व्हॉट एव्हर मे बी, दॅट इज अ बेसिक एलिजिबिलिटी. एव्हिडन्सेस इज इसेन्शियल इन युअर रिसर्च प्रोसेस. Without evidences, you can't, whatever may be your judgment, whatever may be your conclusion of your researcher, as per as the concept of researcher views, you think. Sorry sir, ते चुकून दुसऱ्यांना. म्हणजे पुरावा नसेल तर कुठलंही स्टेटमेंट करताना आपण कालच बघितलं, एव्हिडन्सेस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी और बेसिक क्रायटेरिया ऑफ ईच अँड एव्हरी रिसर्च प्रोसेस, इजंट इट? म्हणजे त्यांचं म्हणणं साहजिक आहे. यू वॉन्ट टू चेक व्हॉट एव्हर मे बी युअर थिंग्स, यू वॉन्ट टू चेक अगेन अँड अगेन, यू वॉन्ट टू चेक, क्रॉस चेक, अँड देन यू फॉर्म्युलेट युअर रिसर्च रिझल्ट. ठीक आहे ना? येस. सेकंड वन इज the structure of your research hypothesis. One is depending research variables and second one is independent research variables, isn't it? Which time researcher consider dependent variables and which time researcher consider independent variables? What was the example of dependent research variables and independent research variables? Yes. Research variables. Last time we discussed regarding research variables.
research variables mean any countable, any measurable things, process, factors that consider as a research variables, isn't it? Whatever may be measurable things in your research process, in your research design, that consider as a research variables, that consider as a research variables. Generally, independent research variables and dependent research variables, these are the two type of research variables. Yes, Kadam, any question? Okay. Depending research variables and independent research variable, these are the two type of research variables generally considered in our research hypothesis. Independent research variable, the concept of independent research variables. Independent research variables is considered as external research variables, means whatever may be a impact on one variables to another variables, that impact should be a measurable in your research hypothesis. Independent research hypothesis, suppose, is considered a types of fertilizer give to a plant, that considered as a independent variables. म्हणजे ज्या घटकांचा परिणाम होणार आहे, that considered as a independent research variables. Suppose teacher teaching impact on a student learning performance, isn't it? म्हणजे शिक्षकाच्या अध्यापनाचा विद्यार्थ्याच्या अध्ययनावर होणारा परिणाम, means teacher teaching, that considered as a independent variables. Whatever may be factors that affecting on, that considered as a independent variables. Suppose temperature, the impact of temperature on human skin, means temperature considered as a independent research variable. Listen carefully, focus on my screen. ज्या घटकाचा परिणाम होणार आहे त्याला काय म्हणायचं, इंडिपेंडंट रिसर्च व्हेरिएबल. आणि ज्या घटकावर होणार आहे, that considered as a depending research variables, means plant growth, वनस्पतीची वाढ, म्हणजे खताचा परिणाम वनस्पतीच्या वाढीवर होणार आहे. खत हा काय झाला किंवा फर्टिलायझर हा काय झालं, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल. ज्याचा परिणाम होणार आहे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, ज्याच्यावर होणार आहे that is a depending variables. Whatever may be in your research subject, whatever may be in your research design, you want to analyze which was the depending variables and which was the independent variables in your research statement, in your research hypothetical statement. At the time of formulating a research hypothesis, you want to create, you want to analyze, you want to formulate which was the depending variables and which was the independent variables in your research design, in your hypothetical research statement, isn't it? म्हणजे तुम्ही तुमच्या परिकल्पनेमध्ये डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स कोणता आहे किंवा इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स कोणता आहे हे पाहणं गरजेचं आहे. इज इट क्लिअर? व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स अँड इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स? आर यू अंडरस्टँड? यस, समजलं का प्रणव? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Anyone tell me one example regarding dependent variables and one example regarding independent variables? Sir, can you repeat these definitions of independent and dependent variables? Yes, yes. Okay. Means whatever may be a factors that affecting the impact of that factor that considered as a independent variables, like types of fertilizer, types of another whatever may be, ज्याचा परिणाम होणार आहे. Listen carefully. That factor considered as a independent variables, isn't it? ज्याच्यावर होणार आहे, that considered as a depending variables. Suppose one human being drink alcohol, and the impact of alcohol in communication skill, in behavioral, in blood pressure, whatever may be, that factor, blood pressures, communication skills, and body movement, that considered as a depending variables, and alcohol that considered as a independent variables. किंवा कुलकर्णी मॅडमने काय केलंय, डोंट थिंक अदरवाइज, फेअर अँड लवली चेहऱ्याला लावलेली आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचा चेहरा गोरा दिसतात. यू आर ऑल मॅच्युअर,
डोंट थिंक अदरवाइज. मग ही फेअर अँड लवली काय आहे? इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. आणि त्यांची स्किन काय आहे? ज्याच्यावर परिणाम होणार आहे त्यांची स्किन काय आहे? डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. इज इट अंडरस्टँड? आर यू अंडरस्टँड? किंवा कृष्णाचं पोट दुखत आहे, तो डॉक्टरकडे गेला आणि डॉक्टर सांगितला की हे गोळी घ्या, हे औषध घ्या, आणि दॅट ड्रग अँड दॅट व्हॉट एव्हर मे बी second type of drug that consider as a independent variables. Two are independent variables, and that stomach, the impact paining stomach, that consider as a depending variables. Yes. Any difficulty? No, sir. Understood. No, sir. Yes. कुठली असेल? एका ज्या घटकाचा परिणाम होणार आहे, that consider is independent variable. ज्याच्यावर होणार आहे कि sometime कि two or more than two variables, two or more than two independent variables affecting on a one thing. One is essential, but sometimes two or more than three factors affecting on one thing. Suppose समजा आशिष आहे, आशिषने काय केलं? आज सकाळी आंघोळ करते वेळेस साबण लावलं, नंतर फेअर अँड लवली लावली, नंतर पावडर लावलं. These are the three different factors, three different independent variables affecting on his skin. Skin is a depending variables, one is independent variables, and three is independent variables, one is depending variables. बरोबर आहे? म्हणजे साबण असेल, फेअर अँड लवली असेल किंवा पावडर असेल, that consider as a independent variable. ज्याचा परिणाम होणार आहे, that consider as a independent variables. and आशिष स्किन, आशिषच्या चेहऱ्याची जी काही स्किन आहे ती काय आहे? डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. ती काय? डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. Oh, sir. The impact of temperature on bacterial growth. Bacterial growth consider as a depending variables, and impact of temperature consider as a independent variables. म्हणजे वातावरणाचा बॅक्टेरिया ग्रोथवर काय परिणाम होणार आहे? वातावरण हे काय झालं? इंडिपेंडंट व्हेरिएबल, आणि बॅक्टेरिया ग्रोथ काय झालं? डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. अलग लक्षात? किंवा कुठली एखादी स्कीम असेल, कॉमर्स आणि मॅनेजमेंटच्या भाषेमध्ये सांगायचं म्हटलं की एखादी स्कीम असेल, त्या स्कीमचा की सेलिंग वर काय परिणाम झाला? स्कीम दॅट कन्सिडर ॲज अ independent variables, and scale or whatever may be a price, whatever may be a distribution, that consider as a depending variables. बरोबर आहे? म्हणजे एका घटकाचा दुसऱ्या घटकावर कसा परिणाम होतो, जसं आता मागणी आणि पुरवठा असेल, किंवा दुसरे कुठले घटक असतील, किंवा मग एखादा फिजिक्स मध्ये असेल, किंवा एखादा फार्मसीचा असेल, किंवा केमिस्ट्रीचा विद्यार्थी असेल, की मग 2 किंवा 3 ड्रगचं कॉम्बिनेशन करायचं असेल, तर मग ड्रग कॉम्बिनेशनचा असेल, ड्रग सोल्युबिलिटीचा असेल, ह्या फॅक्टरचा काय परिणाम होतो की दॅट कन्सिडर ॲज अ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स अँड डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. किंवा की वॉटर टेम्परेचर इम्पॅक्ट ऑन अ लार्वा ग्रोथ, म्हणजे पाण्याच्या तापमानाचा त्या मासळीच्या लहान लार्व्याच्या वाढीवर काय परिणाम होतो. तर लार्वा ग्रोथ कन्सिडर ॲज अ डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स, अँड वॉटर टेम्परेचर दॅट कन्सिडर ॲज अ independent variables. किंवा sometime 2 or 3 independent variables, temperature, moisture, humidity, and rain following impact on a plant growth. Impact on a plant growth. बरोबर आहे? म्हणजे पाऊस, तापमान, आर्द्रता आणि उष्णता यांचा परिणाम वनस्पतीच्या वाढीवर काय होतोय. That time researcher consider a more than 2 independent variables in his research hypothetical statement, in your research design. How to analyze more than 2 independent factors impacted on a depending research variables. Isn't it? Listen carefully. म्हणजे असं असू शकतं की अनेक घटकांचा तो परिणाम आहे, एका घटकाचा परिणाम नाहीये. बरोबर आहे? की that time you consider a 2 or more than 2 independent variables. बरोबर आहे?
म्हणजे फक्त शिक्षकाने शिकवलं म्हणून तुम्ही पास झाला असं नाहीये. तुम्ही ओपन सोर्स नेटवरनं काही माहिती काढलेली आहे, तुम्ही सेल्फ स्टडी केली आहे, मित्राने काही गोष्टी तुम्हाला समजून सांगितलेल्या आहेत. दॅट ऑल फॅक्टर्स कन्सिडर ॲज अ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स आणि युअर लर्निंग आउटकम दॅट कन्सिडर ॲज अ डिपेंडिंग व्हेरिएबल. दॅट कन्सिडर ॲज अ डिपेंडिंग research variables. Isn't it? Are you understand? Yes. Yes, sir. Yes. Anyone tell me one example regarding your subject, which is independent variables and which is depending variables. तुमच्या विषयाच्या अनुषंगाने तुम्ही मला एक इंडिपेंडंट व्हेरिएबलचं उदाहरण सांगा किंवा एक डिपेंडिंग रिसर्च व्हेरिएबलचं उदाहरण सांगा. Sir, bacterial growth and it is it is dependent variable, and the composition of nutrient media, it is independent variable. Yes. Absolutely right. Yes. Next one. सर पॉप्युलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉप्युलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर घेतला आपण म्हणजे पॉप्युलेशन हे डिपेंड आहे ना टाइमवर. हा. म्हणजे पॉप्युलेशन हे डिपेंडेंट झालं, टाइम हे इंडिपेंडेंट झाला. हा. आणि पॉप्युलेशन हे डिपेंड झालं टाइमवर. ओके, बराबर आहे. Yes. Next one. Mathematics, physics, chemistry, life sciences, zoology, botany, chemistry. Hello. Yes. Sir, cost of production will be depend on the volume of the production of any unit. Means cost consider which types of variables and production consider which types of research variables? Dependent variables. Both are interdependent. Okay. Gee. Yes. Next one. Effect of milk adulteration, sir. Milk adulteration is independent, and the effect on the health of people is dependent. Right. Absolutely right. 100% बरोबर आहे तुमचं. Yes. Next one. Physics, chemistry, mathematics, sciences, research scholar. You think in your subject, which is depending variables and which is independent variables, we want to consider in your research area, in your particular interesting research area. तुमच्या विषयामध्ये कुठलं? Yes. Sir, for calculating the total cost of any product, the fixed cost will be the independent cost, and variable cost will be the independent. Means it will be depend on the volume of any unit of production, but the fixed cost will remain the same.
Yes, is it audible now? Yes, sir. Okay. Because of some technical issues. Marathi sir, co-host पुन्हा करतात का मला? Yes, Gaju. Within 1 minute, we will start. कोणी आशिष तिकडे आहे कोणी को-होस्ट करायला सांगता का मला? मराठे सरला कॉल करतो सर. नाही सर पण उचलत नाहीये तिथं. हे तुकलर कोण आहे सर? को-होस्ट करायला सांगा ना. गणेश सर पोस्ट करा गिनगिने सरांना. गणेश सांगितलं मी सरांना. ठीक आहे की sometime 2 or more than 2 is depending variables, sometimes 2 or more than 2 is independent variables that depend on your research design structure. Means whatever may be your research design structure you want to use in your research process, isn't it? म्हणजे काही वेळेस एक असू शकतं, काही वेळेस 2 असू शकतात, किंवा काही मल्टी व्हेरिएबल्स रिसर्च हायपोथेसिस you want to use in your research process. Means 2 or more than 2 is dependent variables, 2 or more than 2 is independent variables. That type of research hypothesis you want to use in your research process. Whatever may be a structure, whatever may be a format, you want to use in your research process. Research, which types of research hypothesis you want to use. म्हणजे हे तुमच्या विषयाच्या अनुषंगाने ही वेगवेगळी रचना आपण करू शकतो, किंवा वेगवेगळ्या प्रकार जे आहेत रिसर्च हायपोथेसिस ते हे सुद्धा आपण काय करू शकतो. इजंट इट? म्हणजे मेन कन्सेप्ट ही जी आहे की you understand the concept of dependent variables, you understand the concept of independent variables, and what was the relationship between dependent variables on independent variables that should be a reflect in your research statement, in your research hypothetical statement. Whatever may be a dependent variables, independent variables, that relationship between dependent variables and independent variables, that should be a reflect, isn't it? Listen carefully. I would say one statement regarding hypothetical statement. In this hypothetical statement, you analyze it, you listen carefully, is how many dependent variables found in that statement and how many independent variables found in that statement, which is dependent variables and which is independent variables reflect in that hypothetical statement. Listen carefully, isn't it? Listen carefully. The impact of social media. I was say the one statement regarding hypothetical statement. Hypothesis. The impact of social media on student behavioral of rural and urban teenage student. The impact of social media on student behavior on rural and urban teenage student. That is the hypothetical statement. In this hypothetical statement, which is dependent variables and which is independent variables, how many dependent variables and how many independent variables reflect in this statement? Yes, Mangesh ji, are you understand my statement, hypothetical statement? Yes, sir. Yes. Yes. मग ह्याच्यामध्ये किती डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स आहेत आणि कोणकोणते डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स आहेत आणि कोणकोणते इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स आहेत ते मला सांगा. Urban and rural is independent. Yes, Sheetal ji, which is independent variables? Social media is independent variable, while yes. two are the dependent variables, that is rural and urban students or teenagers. Yes. Rural and urban teenage student behavior, that is a dependent variable. And one is a independent variables. Social media that considered as a independent variable. ज्याचा परिणाम होणार आहे
that considered as a independent variable. चष्म्याची बदलली की आमच्या गल्लीतील मुलींनी चष्म्याची फ्रेम बदलली, तिकडे गजनी आला की आमच्या गल्लीतील 2-3 मुलं गजनी झाले. द इम्पॅक्ट ऑफ सोशल मीडिया दॅट कन्सिडर ॲज अ independent variable. And teenage rural and urban student behavior that consider 2 is a depending variables. Rural teenage behavior and urban teenage student behavior, isn't it? That consider as a depending variable. म्हणजे त्या विधानामध्ये एक हे इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स आहेत आणि 2 हे डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स आहेत. ज्याच्यावर होणार आहे consider as a depending variable. ज्याचा परिणाम होणार आहे that consider the independent variables. And generally researcher to measure, to analyze the impact of 1 or 2 or more than independent variable impact on a depending variables. म्हणजे एका फॅक्टरचा दुसऱ्या फॅक्टरवर परिणाम मापण्याच्या प्रक्रियेला रिसर्च हायपोथेसिस असं म्हणतात. व्हॉटएव्हर मे बी, म्हणजे कुठले असेल व्हॉटएव्हर मे बी, you did not find out the relationship, you did not find out the whatever may be your research result, की मला असं वाटलं की हे 2-3 प्लांटचा एक्स्ट्रॅक्ट करावा आणि मग हे असं होण्याची शक्यता आहे किंवा ह्याला या प्लांटला अँटी कॅन्सर ऍक्टिव्हिटी पोटेंशियल ऍक्टिव्हिटी असण्याची शक्यता आहे. कलेक्ट करणार त्याचा एक्स्ट्रॅक्ट आणि की समटाइम or sometime hypothesis will be not significant, means sometime your hypothesis is truly tested or sometime your hypothesis was rejected, means that depend upon the after the collection of research data, after the testing of research hypothesis, isn't it? Are you understand the conceptual understanding regarding depending variables and independent variables? Yes sir. Yes sir. कोणी केमिस्ट्रीचा विद्यार्थी आहे का? केमिस्ट्रीच्या विद्यार्थ्याने एक मला उदाहरण सांगेल. एनी रिसर्च स्कॉलर बिलोंग फ्रॉम केमिकल सायन्सेस, प्लीज टेल मी वन डिपेंडिंग एक्झाम्पल ऑफ डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स आणि इंडिपेंडिंग व्हेरिएबल्स. केमिकल सायन्सेस, मॅथमॅटिकल सायन्सेस और फिजिक्स. यस, एनीवन टेल मी. ह्या 3 आहे का? Sir, rate of enzyme activity is dependent variable, while Yes. independent variable is temperature. बराबर आहे. नेक्स्ट वन, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. Sir, rate of interest is depend on investment time period. Which is depending variables and which is independent variables? Pandurang ji. Rate of interest is dependent on investment decision. बरोबर. येस, म्हणजे तुम्हाला आता स्ट्रक्चर कळालं. आता आपण नंतर त्याच्या ह्याच्याकडे जाऊया. हे what is the research hypothesis? Explain the various characteristics of research hypothesis and explain the types of research hypothesis. That type of question asked in previous examination views. परिकल्पना म्हणजे काय? परिकल्पनेची, चांगल्या परिकल्पनेची लक्षणे स्पष्ट करून त्याचे प्रकार स्पष्ट करा. अशा प्रकारचे बऱ्याच वेळेस प्रश्न अगोदरच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आलेला आहे. त्या अनुषंगाने आज आपण 15 मार्क इथं कव्हर करणार आहोत या सेशन मध्ये. व्हॉट इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयडियल रिसर्च हायपोथेसिस. जसं आता आदर्श शिक्षकाचे लक्षणे वेगळे, आदर्श गृहिणीचे लक्षणे वेगळे, आदर्श रिसर्च स्कॉलर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयडियल रिसर्चर आर डिफरंट, आयडियल स्टुडंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरंट. की सेम वे in research process, which types of research hypothesis formulating in your research design, which was the ideal research hypothesis, what was the characteristics of ideal research hypothesis, that part is essential in as far as the concern of researcher views or research process views. म्हणजे चांगल्या परिकल्पनेची किंवा चांगल्या अंदाजाचे लक्षणे काय आहेत? what was the characteristics of ideal research hypothetical statement. म्हणजे अंदाज तर भरपूर असतात, पण चांगला अंदाज कशाला म्हणायचं, अचूक अंदाज कशाला म्हणायचं, त्याचे लक्षणे काय आहेत, या अनुषंगाने आज आपण विचार करणार आहोत. की जनरली each and every research hypothesis that should be depend on your research objectives. That is the essential characteristics of each and every research hypothesis. प्रत्येक परिकल्पना ही संशोधन उद्दिष्टांवर अवलंबून असणं गरजेचं आहे. हे एक चांगल्या परिकल्पनेचं लक्षण आहे. मीन्स
that should be research hypothesis, that should be depend on the your research objectives. Means your research objectives angles reflect in your research hypothetical statement or your research hypothesis. म्हणजे उद्दिष्टाचा घटक हा रिसर्च हायपोथेसिस मध्ये प्रतिबिंबित होणं अपेक्षित आहे किंवा रिफ्लेक्ट होणं अपेक्षित आहे. हे काय चांगल्या परिकल्पनेचं लक्षण आहे. और at the time of formulating a research hypothesis, that should be essential, whatever may be your depending variables and whatever may be your independent variables, that both research variables should be measurable again and again. That is a basic characteristics of ideal research hypothesis. Listen carefully or write down, isn't it? म्हणजे दोन्हीही व्हेरिएबल्स हे मापनक्षम असले पाहिजे. whatever may be your depending variables and whatever may be your independent variables, that both research variables should be measurable. Which types of norms and standards you want to use at the time of measurements of that research variables, that is essential characteristics of ideal hypothesis. चांगल्या परिकल्पनेतील स्वाश्रयी चल व आश्रयी चल हे मापनक्षम असणं गरजेचं आहे. हे एक चांगल्या परिकल्पनेचं लक्षण आहे. Should be a testable, that is a basic characteristics of ideal research hypothesis. What research hypothesis that should be a testability, basic characteristics of each and every ideal research hypothesis. मांडलेला अंदाज हा परीक्षणक्षम असणं गरजेचं आहे. टेस्टेबिलिटी, टेस्टेबल, that is a basic characteristics of ideal research hypothesis. म्हणजे करता आलं पाहिजे, मापन करता आलं पाहिजे, तपासता आलं पाहिजे. ज्या गोष्टी मापनक्षम आहेत, तपासण्याजोग्या आहेत, अशाच गोष्टींचा विचार आपण रिसर्च हायपोथेसिस म्हणत असतो. हे काय चांगल्या परिकल्पनेचे लक्षणे आहेत. आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च हायपोथेसिस. अँड whatever may be your research hypothesis, after the testing significant relevant significantness or significant level, researcher views you want to use in at the time of testing of your research hypothesis. Means whatever may be a significant level you want to use at the time of testing of your research hypothesis. Significantness म्हणजे काय? What is the concept of significantness? 1 minute. Yes. Set of the significant level. These are the significant level generally used at the time of testing of your research hypothesis. अंदाज तपासत्या वेळेस किंवा अंदाज जो आहे किंवा परिकल्पना जी आहे किंवा रिसर्च हायपोथेसिस जो आहे त्याची उकल करण्यासाठी या सिग्निफिकंट लेवलचा वापर केला जातो. At the time of testing of your research hypothesis, generally basic science research scholar was use a 0.01 significant level of testing of your research hypothesis. Or commerce and management student, interdisciplinary student, research scholar or a humanity research scholar generally use a 0.05 significant level at the time of testing of your research hypothesis. म्हणजे तुम्ही मांडलेला अंदाज तपासण्यासाठी या 2 सार्थकता स्तरांचा वापर केला जात असतो. 0.01 सार्थकता स्तर व 0.05 सार्थकता स्तर या 2 सार्थकता स्तराचा वापर परिकल्पना उकल करण्यासाठी केला जातो. Isn't it? What is the meaning of 0.01 significant level? And what is the meaning of 0.05 significant level? याचा अर्थ काय आहे किंवा हे कशासाठी वापरायचे significant level? Means whatever may be your predictions, you check 100 times. You check 100 times. 99%, 99 times
research result was same in position one time, that research result may be in changing position, that considered as a 0.01 significant level. म्हणजे दगड वर टाकला तर 99 वेळेस खालीच येणार आहे, एक वेळेस वरी जाण्याची शक्यता आहे, अशी परिस्थिती दर्शवणारं चित्र, त्याला आपण काय म्हणायचं, 0.01 हे सार्थकता स्तर आहे. Means 90% is truthness, 1% error will be there in your hypothetical statement, in your testing of your research hypothesis. म्हणजे तुम्ही मांडलेला अंदाज 99 वेळेस खरंच असण्याची शक्यता आहे, एक वेळेस चुकण्याची शक्यता आहे, अशी सार्थकता स्तर तुम्ही तुमच्या संशोधनामध्ये वापरणं गरजेचं आहे. किंवा जनरली others type of research scholar, social science, humanities or interdisciplinary research scholar use a 0.05 significant level. 0.05 सार्थकता स्तर हा परिकल्पना उकल करण्यासाठी वापरला जातो. In this case 95% is truth, 5% error will be there. That type of condition you consider in your रिसर्च हायपोथेसिस टेस्टिंग. म्हणजे 95% अंदाज खरं असण्याची शक्यता आहे, 5% अंदाज चुकण्याची शक्यता आहे, 5% अंदाज चुकण्याची शक्यता आहे. And which time researcher got a research patent? Means 0.01 or 0.001, 99.99 दशक, 99.99% that research result was same in position, 1%, 0.1% research result will be a change position. That time researcher got a research patent. Means 100% internal validity and 100% external validity of that research hypothetical statement. That time you got a research patent. That time you got a research patent. म्हणजे कुठले असेल, म्हणजे 100 वेळेस तपासून बघितल्या वेळेस 99 वेळेस निष्कर्ष तेच येत असतील, 1% निष्कर्ष चुकण्याची शक्यता असेल, अशी कंडिशन म्हणजे काय, 0.01 आहे. बरोबर आहे, 100 वेळेस यायला पाहिजे, तेच निष्कर्ष यायला पाहिजे. किंवा आता ह्या आपल्या प्रिया अग्रवाल आहेत, प्रिया अग्रवालच्या घरी आपण 43 स्कॉलर जाणार आहोत आणि त्यांना सांगितलेलं आहे की 43 टाइम यू प्रिपेअर 1 कप ऑफ टी अँड सेम 43 कप टी टेस्ट आर सेम. म्हणजे 43 वेळेस त्यांना चहा करायला सांगितला, एक वेळेस एकच चहा करायचा आहे आणि चहाची चव ही सारखीच राहिली पाहिजे. इज इट पॉसिबल? शक्य आहे का प्रिया? नो सर. नो. जर शक्य नसेल की युअर हायपोथेसिस आर डिफरंट, युअर सिग्निफिकंट लेवल आर डिफरंट, म्हणजे दॅट इज नॉट युनिव्हर्सल ट्रूथ. म्हणजे तुम्ही पेटेंट केव्हा मिळेल तुम्हाला, 100 वेळेस तपासून बघितलं तर निष्कर्ष सेम यायला पाहिजे. दॅट टाइम यू गॉट अ रिसर्च पेटेंट. इंटरनल व्हॅलिडिटी अँड एक्सटर्नल व्हॅलिडिटी, जसं की तो नागपूरचा मटन खानावळवाला आहे, साऊजी मटन खानावळ, त्याच्या मटणाच्या रस्स्याचं रिसर्च पेटेंट आहे. ही फाईल अ रिसर्च पेटेंट आणि ही ग्रँट अ रिसर्च पेटेंट. 12ही महिने 24 तास कधीही जा, साऊजी मटन खानावळच्या मटणाच्या रस्स्याची टेस्ट बदलत नाहीये. That time you got a research patent. 100 time you prepare and 100 time you taste, same taste will be there. किंवा मग तिरुपतीचा जो लाडू आहे त्याचं सुद्धा रिसर्च पेटेंट आहे. 12ही महिने हजारो लाडू किंवा लाखो लाडू असतील, लाडूच्या टेस्ट, प्रत्येक लाडूची टेस्ट ही सेम आहे. That time you got a research patent. Means whatever may be your research result, that research result was whole world generalizable. Research result not in changing position. That time you got a research patent. 100 वेळेस निष्कर्ष जर सारखेच बघितले असेल, सारखेच येत असतील, तर त्यावेळेस तुम्हाला संशोधन पेटेंट मिळेल. नाहीतर मग काय, फक्त तर ऍक्सिडेंटली तो प्रिया मॅडमचा चहा चांगला झालता, त्यांना चहा बनवता येत नाही, किंवा त्यांच्याकडे नवीन मेथोडॉलॉजी किंवा असं काही नाही, किंवा बऱ्याच याचे चहावाले सुद्धा टेस्ट आहेत, जसं कुठला ते 2-3 ह्याचे पेटेंट पण फाईल आहेत, ग्रँट पण पेटेंट आहेत. महाराष्ट्रातल्या कुठल्या ठिकाणी जरी गेलं तर त्यांच्या चहाची चव बदलत नाहीये.
त्यांच्या चहाची चव बदलत नाहीये. ते अमृततुल्य त्यांचे सुद्धा चहाचं पेटंट आहे, टेस्टचं पेटंट आहे. महाराष्ट्रामध्ये कोणत्या ठिकाणी जर गेलं तर त्याच्या चहाची चव बदलत नाही. त्याचा फॉर्मॅट जो आहे तो सेम आहे. दॅट टाइम यू गॉट अ रिसर्च पेटंट. Means research result was not in changing position. 100 time truthness. Means whole word research result was generalizable. That type of hypothetical statement you want to test and you want to generalize a research result from your research process. म्हणजे तुमचा अंदाज असा असला पाहिजे की तो 100% खरा निघला पाहिजे आणि 100 वेळेस जरी तपासून बघितला तरी निष्कर्ष तेच यायला पाहिजे. निष्कर्ष तेच यायला पाहिजे. Isn't it? That time researcher use a 0.01, 0.02 or 0.05 significant level at the time of testing of your research hypothesis. म्हणजे अंदाज तपासून पाहण्याच्या त्या प्रक्रिया होत्या. Yes, any difficulty regarding characteristics of research hypothesis, format of research hypothesis and depending variables and independent variables. याच्यामध्ये काय अडचण आहेत का? Yes, anyone tell me? No, sir. No, sir. जर नसेल तर एक दोन प्रश्न विचारतो आणि पुढे चलूया आपण टाइप्स कडे चलूया. लोखंडेजी, संध्या लोखंडे, आर यू इन क्लास? Pooja Sontake, are you in class? Are you understand the all content? Yes, sir. You tell me 2 characteristics of ideal research hypothesis. Ideal. चांगल्या परिकल्पनेचे 2 लक्षणे सांगायचे. You tell me 2 characteristics of ideal research hypothesis. Yes, anyone tell me? कोण सांगतं? बाला साहेब. Yes, Ashish. Research hypothesis depend on the research objectives. Yes. And both research variables are measurable. Yes, बरोबर आहे. And next one. And the significance level of the hypothesis testing is 0.01 and 0.05. Yes. And research hypothesis should be a testable, should be a measurable. बरोबर आहे. Yes. आता आपण टाइप्स ऑफ रिसर्च हायपोथेसिस जाऊया. त्याच्यावर लॉंग क्वेश्चन 1000% येणार आहे. आणि बाकीच्या विद्यापीठाचे मी फक्त एका विद्यापीठाची, आपल्या विद्यापीठाची गुगल ड्राईव्हची लिंक तुमच्या ग्रुपला टाकलेली आहे. सोलापूर विद्यापीठ असेल किंवा जळगाव विद्यापीठ असेल त्यांच्या प्रश्नपत्रिका पण तुमच्या ग्रुपवर टाकतो. दुसरी गुगल ड्राईव्हची लिंक आहे की तुम्हाला कळेल की कुठल्या विद्यापीठाला कुठले प्रश्न विचारलेले आहेत. टाइप्स ऑफ Sir, रिसर्च. can you explain again format of hypothesis? Format of hypothesis generally that depend upon the researcher views. Minimum 2 variables is essential in research hypothetical statement, or more than 2 that depend upon the research subject or research subject design on which types of research format you want to use. म्हणजे कमीत कमी 2 व्हेरिएबल्स असणं गरजेचं आहे. 2 पेक्षा जास्त तुम्ही वापरू शकता. हा फॉर्मॅट इसेन्शियल आहे. की बेसिक एबिलिटी काय आहे किंवा बेसिक एलिजिबिलिटी काय आहे की मिनिमम 2 रिसर्च व्हेरिएबल्स, वन इज डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स, वन इज इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स इन इसेन्शियल in a hypothetical statement. As per the concern of researcher views, you want to deal 2, 3, 4, 5 multi-variables research hypothesis you want to use in your research process. ते त्या विषयानुसार बदलत राहतं. फिजिक्स वाले वेगळे करतात, मॅथ्स वाले वेगळे करतात, कॉमर्स वाले वेगळे यूज करू शकतात, लाईफ सायन्स वाले वेगळे यूज करू शकतात. परंतु मेन फॉर्मॅट काय आहे की 2 जे घटक आहेत दॅट इज 2 variables is essential. One is dependent variables, one is independent variables. That is the format of research hypothesis. Isn't it? Are you understand? Yes, sir. Okay. The types of research hypothesis. These are the 6 types of research hypotheses generally used in each and every subject, each and every research discipline. Means science and technology research scholar, commerce and management, interdisciplinary scholar, or humanity research scholar was used. These are the 6 popular types of research hypotheses used in each and every
research hypothesis. First one is a simple research hypothesis. Second one is a complex research hypothesis. Third one is empirical research hypothesis. Fourth one is a null research hypothesis. Fifth one is alternative research hypothesis, and sixth one is a causal research hypothesis. These are the 6 types of research hypotheses generally used in various different types of research subject, isn't it? First one is a simple research hypothesis. Simple research hypothesis, which time researcher use a simple research hypothesis, and which types of research variables used in a simple research hypothesis. And at the time of testing of research simple hypothesis, which statistically parameters used in a testing of simple research hypothesis. साधा अंदाज, त्याला काय म्हणायचं? साधा अंदाज. Simple research hypothesis. In this simple research hypothesis, minimum 2 or maximum 2, only 2 research variables reflect in your research simple hypothesis. One is dependent research hypothesis, another is independent research hypothesis. Researcher measure the impact of one independent variables on one depending variables. That time researcher use a simple research hypothesis. एका घटकाचा एका घटकावर परिणाम अभ्यासणार असाल तर संशोधक या नात्याने तुम्हाला सिंपल हायपोथेसिस किंवा सिंपल रिसर्च हायपोथेसिस वापरणं गरजेचं आहे. आय वॉन्ट टू यूज अ टेम्परेचर ऑन ग्रोथ किंवा इम्पॅक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ह्युमन स्किन. दॅट इज सिंपल हायपोथेसिस. One is dependent variables, one is independent variables. The impact of teacher teaching performance on student learning performance. शिक्षकाच्या अध्यापनाचा विद्यार्थ्याच्या अध्ययनावर काय परिणाम आहे? In this statement, one is dependent variables and one is independent variables. बरोबर आहे. म्हणजे एका घटकाचा एका घटकावर होणारा परिणाम अभ्यासण्यासाठी साध्या परिकल्पनेचा वापर केला जातो. Which time researcher use a simple research hypothesis? Researcher can measure the impact of one independent variables on one depending variables. That time researcher was use a simple types of research hypothesis. Simple research hypothesis, isn't it? The impact of one drug on a heartbeat. एखाद्या ड्रगचा हार्टबीट वर काय होतोय, किंवा एखाद्या प्लांट एक्सट्रॅक्टचा द इम्पॅक्ट ऑफ वन प्लांट एक्सट्रॅक्ट ऑन वन टाइप ऑफ सेल लाइन कॅन्सर. एका प्लांटचा सेल लाइन कॅन्सर वर काय परिणाम होतो. दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ सिंपल हायपोथेसिस. कुठली असेल, किंवा मग एखाद्या स्कीमचा किंवा एखाद्या ह्याचा किंवा आता ऑनलाईन currencies, the impact of online currencies on a transaction views. That time researcher use a simple hypothesis, isn't it? Yes. Any difficulty regarding a simple hypothesis, the concept of simple research hypothesis? No sir. Yes. Are you understand? No, sir. साधी गोष्ट आहे. एका घटकाचा एका घटकावर होणारा परिणाम कुठले असेल. समजा आशिषच्या आईनं आशिषच्या गालावर एक चापट मारली, तर आशिषच्या आईचा हात हा काय झाला, इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स, आणि आशिषचा गाल काय झाला, हा डिपेंडिंग व्हेरिएबल. द इम्पॅक्ट ऑफ इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स ऑन डिपेंडिंग व्हेरिएबल्स, दॅट शुड बी अ रिफ्लेक्ट इन सिंपल हायपोथेसिस. एका घटकाचा दुसऱ्या घटकावर होणारा परिणाम आपण साध्या परिकल्पनेत मागतो. व्हेरी इझिली, व्हेरी अंडरस्टँडेबल. Conceptual understanding is most important rather than bookish knowledge, isn't it? Means you want to understand the conceptual understanding. म्हणजे तुम्हाला संकल्पना समजून घ्यावं लागेल. Yes. 8, 9, 6, 7, 6, 1, 6, 1. Any question? Whatever may be, bookish knowledge are different and conceptual knowledge are different. समजा आशिषने काय केलं, एक स्विमिंगचं पुस्तक आणलं आणि रात्रभर वाचवलं. आणि स्विमिंग करणं सोपं आहे,
काही नाही, उजवा हात हलवायचा, डावा हात हलवायचा, उजवा पाय हलवायचा, डावा हात पाय हलवायचा आणि सर्व पाठ केलं, मुखोद्गत केलं, पाठ केलं. आणि उद्याच्याला काय केलं किंवा एका तासाने काय केलं, गोदावरीच्या डॅम मध्ये, विष्णुपूरच्या डॅम मध्ये उडी मारली. इज इट पॉसिबल? होणं येईल का त्यांना? नाही. सेम वे. किंवा शीतलनं काय केलं, हाऊ टू प्रिपेअर आयडियल बिर्याणी पुस्तक आणलं एक पाककलेचं, आणि मग बिर्याणी कशी करायची हे रात्रभर दिवसभर वाचवलं आणि संध्याकाळी बिर्याणी केली. चांगली येईल का? नाही. येईल नाही गॅरंटी नाहीये. मी सेम वे बुकिश नॉलेज आर डिफरंट अँड प्रॅक्टिकल नॉलेज आर डिफरंट. की रिसर्च इज अ प्रॅक्टिकल नॉलेज, म्हणजे तुम्ही प्रॅक्टिकल करणं गरजेचं आहे, कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग करणं गरजेचं आहे. आणि एकदा संकल्पना समजली की कुठलंही पुस्तक वाचवायची गरज नाहीये, कुठलंही पुस्तक वाचवायची गरज नाही. ठीक आहे. आर यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ सिंपल रिसर्च हायपोथेसिस? Yes, sir. Yes. Anyone tell me one example regarding a simple research hypothesis? कोण सांगतं? Simple research hypothesis उदाहरण loudly. Sir, impact of starter on milk. Yes, impact on starter on milk. Yes. Next one. Sir, impact of sound vibrations on human ear. Impact of sound vibration on Human ear. human ear. बराबर आहे. सिंपल हायपोथेसिस, एका घटकाचा एका घटकावर होणारा परिणाम आहे. Yes. Next one. Basic sciences belong from research scholar. Amanna. Yes, Sheetal. Impact of pesticide on pest. Yes, impact on pesticide on whatever may be another variables. Impact of smoking on lungs. Yes, impact of smoking on whatever may be your another research variable. Are you understand? All research scholars understand the conceptual understanding regarding a simple research hypothesis. Yes. Next one is a complex research hypothesis. In complex research hypothesis, two or more than two depending variables or two or more than two independent variables, that type of research variables you want to use in your research hypothesis, that is called a complex research hypothesis. दो और दो से ज्यादा डिपेंडिंग वेरिएबल्स है, दो और दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और आप पूरे के पूरे रिसर्च हाइपोथेसिस में यूज करना चाहते हैं, दैट टाइप ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस इज कंसिडर्ड एज अ research complex hypothesis, isn't it? The impact of temperature, humidity, and sound pollution on a human psychology or human another psychofactors analysis, whatever may be, or learning process, teaching process, or another process, means so many. Two or more than two is dependent variables, or two or more than two is independent variables. You want to use in your research hypothesis. That type of research hypothesis considered as a complex research hypothesis. म्हणजे इकडचे दोन पेक्षा जास्त आहेत, तिकडचे दोन पेक्षा दोन किंवा दोन पेक्षा जास्त आहेत, अशा प्रकारचे जे काही परिकल्पना आहेत किंवा रिसर्च हायपोथेसिस आहेत, त्याला काय म्हणायचं? कॉम्प्लेक्स रिसर्च हायपोथेसिस. येस. Anyone tell me one example regarding a complex research hypothesis? Yes. Having multiple fruits and its effect on immunity. बराबर है. Yes. Next one. And I think yes. The effect of genetically modified crops and animals on human population. बराबर. The impact of genetically modified plant, 2, 3, 4 plant you consider, or next one is 2, 3 depending on variable. Impact of industrial water on fish and aquatic animals. बराबर. Impact of water. Was two type of research. Nature of your research data. One is longitudinal data or
सर आवाज येत नाही. येस येस येतोय आता. हा Yes, सर sir. येतोय. ओके. येस स्क्रीन दिसते. हो Yes, सर. sir. Yes. Yes, empirical research hypothesis. You want to deal a longitudinal data. As far as the concern of longitudinal data, so many depending factors and so many independent factors you want to analyze a longitudinal way. That time researcher use a empirical research hypothesis. Means you consider a longitudinal types of research data, longitudinal type of research factors, longitudinal type of depending variables and independent variables, isn't it? Means whatever may be. जसं आता हे 44 रिसर्च स्कॉलर आहेत, यांचे 10वीचे मार्क, 12वीचे मार्क, बीएचे किंवा यूजीचे मार्क, पीजीचे मार्क आणि पेटचे मार्क, दॅट कन्सिडर ॲज अ लॉन्जिट्युडनल वे ऑफ इन्फॉर्मेशन. म्हणजे हे 10वी पासूनच ढ आहेत, 10वी पासून हुशार आहेत, मला हे पाहिजे. In longitudinal way, I want to deal the beginning of the problem and till date of the problem. I want to deal each and every steps of that problem. That time researcher use a empirical research information, empirical research hypothesis. The impact of NEP, National Education Policy, on primary education sectors, secondary education sectors, tertiary education sectors, college level education sectors और research education sectors. मैंने आपको पेपर दिए थे ना 2 देने के लिए एग्जाम में, किधर रखे? किसको दिया था? Yes, जिया जी. Any difficulty? Yes, yes. Yes, yes. कोण आहे? माईक तुमचा अनम्यूट आहे. Okay. Empirical research hypothesis means whatever may be a longitudinal way. The impact of one independent variables on so 2 or 3 or 4 depending variables. That time researcher consider a empirical research hypothesis. The impact of temperature on small child, age of 1 to 5, age of 5 to 10, age of 10 to 20, age of 20 to 30. That type of information you want to collect. That type of research hypothesis, the impact of one independent variables on so many depending variables. That type of research hypothesis you want to formulate. It is considered as a empirical research hypothesis. म्हणजे एका घटकाचा अनेक घटकांवर, अनेक इंडिपेंडेंट घटकांवर काय परिणाम होणार आहे at a time. That time researcher was use a empirical research hypothesis. जसं आता कोरोनाच्या ह्याच्यामध्ये काय होतं की एखादी वॅक्सिन असेल, त्या वॅक्सिनचा परिणाम, वॅक्सिन कन्सिडर ॲज अ इंडिपेंडेंट व्हेरिएबल्स, की स्मॉल चाइल्ड, टीनेज चाइल्ड, नॉर्मल ह्युमन बीइंग, old human being, pregnant women, whatever may be, these are the so many depending factors, the impact of depending factors. That time researcher use a empirical research hypothesis. Empirical research hypothesis. Yes, are you understand the concept of empirical research hypothesis? Nice, sir. Please नाही. ओके ओके. कुठली असेल एका समजा whatever may be national किंवा one policy, one bank policy on small industries, middle industries or large industries. Whatever may be a bank policy, the impact of bank policy on a small industrial peoples, middle industrial peoples or larger industrial people. That time researcher use a empirical research hypothesis. म्हणजे एका घटकाचा अनेक घटकांवर आणि उदग्र स्वरूपाचा जो परिणाम आहे तो कसा होणार आहे, किंवा एखादे ड्रग आहे, द इम्पॅक्ट ऑफ दॅट ड्रग ऑन डिफरंट टाइप ऑफ पेशंट्स, that should be a measure in a empirical research hypothesis. Empirical research hypothesis. Suppose कि teacher teaching performance on a commerce and management background research scholar, science and technology research scholar, interdisciplinary research scholar, and humanity research scholar. I want to deal at a time. I want to measure at a time or empirically.
that considered as a empirical research hypothesis. इम्पेरिकल रिसर्च हायपोथेसिस म्हणजे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत काय परिणाम होणार आहे, सुरुवातच्या घटकापासून शेवटच्या घटकापर्यंत काय परिणाम होणार आहे, तो एकाच वेळेस मापायचा. आर यू अंडरस्टँड? whatever may be impact of independent variables, one is independent variables and so many depending variables you want to deal at a time, that type of condition you want to use in empirical research hypothesis. एकाच घटकांचा अनेक घटकांवर होणारा परिणाम मला एकाच वेळेस मापायचा आहे, अशा वेळेस उदक परिकल्पनेचा वापर केला जात असतो. Yes, are you understand? Confusion ही confusion है? Yes sir. Yes sir. Thank you sir. Yes sir. हाँ, म्हणजे कुठली असेल की समजा काय केलं की नवीन एखादी मेडिसिन तयार केलं आहे, मग त्या मेडिसिनचा काय करायचंय, मला ॲट अ टाइम काय परिणाम होतोय लहान मुलांवर, युवकांवर, प्रौढांवर, मध्यमवर्गीयावर किंवा अतिप्रौढावर काय परिणाम होणार आहे ते मला पाहायचंय एकाच वेळेस. whatever may be the impact of social media on small children, teenage children, young children, old people, various old people, I want to measure at a time. That time research scholar use a empirical research hypothesis. म्हणजे काय, empirical research hypothesis. किंवा कुठली एखादी स्कीम असेल, कॉमर्शियल मॅनेजमेंट मधल्या मुलांनी काय केले, सेलिंग साठी केलेली स्किल आहे, मग त्या स्कीमचा अनेक घटकांवर काय परिणाम होणार आहे हे ॲट अ टाइम मला पाहायचंय. दॅट टाइम आय वॉन्ट टू यूज अ एम्पेरिकल रिसर्च हायपोथेसिस. इम्पेरिकल रिसर्च हायपोथेसिस. किंवा कुलकर्णी मॅडमने काय केलंय की नवीन एक फेअर अँड लवली तयार केलेली आहे, मग त्या 10 वर्षाच्या मुलांपर्यंत, 20 वर्षाच्या मुलांपर्यंत, नंतर वरच्या मुलांपर्यंत, नंतर कोणत्या गटांवर तो जास्त प्रभावी आहे हे मला पाहायचंय. दॅट टाइम I want to use a empirical research hypothesis. Yes, anyone tell me one example regarding a empirical hypothesis? समझी का संकल्पना का नहीं? आशीष? Yes sir. Yes, you tell me one example. Diksha? Sir, effect of viral disease on child's mid-age persons and old-age persons. Yes, बराबर है. दीक्षा जी? Sir, impact of one type of types of curries. बराबर है. Yes. तुरंग? कृष्णा? Sudham? Sir, impact of Yes. sir change in atmosphere on crop production. बराबर. Various type of cross production you consider at a time. Yes. Impact हाँ, of next. central government on all the states. बराबर है. Impact of central government policy on a different state. Rate of Impact of diabetes different occurrence. carbon sources on the bacterial growth. बराबर. Different type of bacterial growth. One type के नहीं, बहुत सारे types के बैक्टीरिया लिए है आपने, तो empirical hypothesis यूज कर सकते हैं. बराबर है. Impact of demonetization. बराबर है. Yes. शीतल जी? Sir, impact of deforestation. बराबर है. Yes, yes. Rate And, of diabetes occurrence in different age group peoples. बराबर है. स्नेहा जी बराबर है. Next one is a null hypothesis. Fourth one is a null hypothesis. Which time researcher use a null hypothesis? What was the merits and demerits of null hypothesis? Generally, the impact of one independent variables on a two different group or two different strata or two different layer or two different stratified group. That time researcher use a null hypothesis. In null hypothesis, whatever may be a prediction, the researcher are play a neutral role in formulating a research hypothesis. Null means zero, whatever may be
positive impact or negative impact, both side of impact I want to consider in my research. That type of condition reflect in your research statement, that is considered as a null hypothesis. Before the experiment, the impact of one depending variables or on one independent variables, the positive impact or negative impact, both side of impact I want to consider in my research process. That type of situation consider in your research process. That time researcher use a null hypothesis. म्हणजे मी शिकवण्यामुळे पास भी होऊ शकतात, नापास भी होऊ शकतात. Both side impact I want to consider in my research process. But sometime only one side impact I want to consider in my research process. That is one side null hypothesis or one tail prediction. One tail prediction or two tail prediction. That is a two type of two tail prediction. Null hypothesis means whatever may be a independent variable, the impact of independent variables on a two different group that was equal mentioned in that statement. Means suppose I want to explain one example. The impact of teacher teaching on male research scholar and female research scholar, that was same, that was not significant. That type of research hypothesis is considered as a null hypothesis. Yes. Sontekeji, Pooja, any question? ओके. म्हणजे एका घटकाचा दोन घटकांवर समान परिणाम होणार आहे अशी परिस्थिती दर्शवणार विधान म्हणजेच नल हायपोथेसिस. द इम्पॅक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन male behavior and female behavior that was not significant. That type of hypothesis was considered as a null hypothesis. सोशल मीडियाचा पुरुषांच्या वर्तनावर व महिलांच्या वर्तनावर सारखाच परिणाम होणार आहे. द इम्पॅक्ट ऑफ अल्कोहोल ऑन मेल behavior and female behavior that was not significant or that was same. Not significant म्हणजे काय, लक्षणीय फरक नाहीये. Not significant means same. Not significant याचा काय अर्थ काय की 19-20 आहे, तेवढा काही जास्त फरक नाहीये. Or that was same. की generally in research terminology not significant words was used. Means that was same impact is there. That condition reflect in your hypothetical statement. That statement is considered as a null hypothesis. That considered as a null hypothesis. कुठला असेल म्हणजे समतुल्य आहेत किंवा परिणाम हा समतुल्य होणार आहे असं दर्शवणारं विधान. उद्याच्याला भारत किंवा बांगलादेश याच्यापैकी कोणी दोन्ही जिंकू शकतात किंवा दोन्हीचाही प्रभाव सारखाच आहे असं दर्शवणारं विधान जो आहे ते काय आहे, नल हायपोथेसिस. त्याला काय म्हणायचं, नल हायपोथेसिस. एखाद्या ड्रगचा मेल पेशंटवर आणि फिमेल पेशंटवर सारखाच परिणाम होणार आहे हे म्हणजे काय, नल हायपोथेसिस. व्हॉटएव्हर मे बी अ इम्पॅक्ट ऑन independent variables on two different depending variables that was not significant reflect in that statement, it is called a null hypothesis. Yes. Are you understand the conceptual understanding regarding null hypothesis? Yes, sir. Yes, sir. Anyone tell me one example? Sir, effect of COVID-19 vaccine on young and old age persons. Yes, that was not significant. Same, that was impact same. म्हणजे Yes, परिणाम sir. सारखाच होणार आहे असं वाक्य लिहायचे आपल्याला. Yes, Krishna. सर इम्पॅक्ट ऑफ टीचिंग ऑन बॉयज अँड गर्ल्स जे स्टुडंट जर घेतले तर. बरोबर आहे. टीचर टीचिंग इम्पॅक्ट ऑन नॉट सिग्निफिकंट आउटपुट इन स्टुडंट लर्निंग परफॉर्मन्स और मेल स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस और फीमेल स्टूडेंट लर्निंग परफॉर्मेंस. Yes.
Impact of temperature on different plants. बरोबर आहे. The impact of temperature on a different plant growth that was not significant means that was same. म्हणजे तापमानाचा गव्हाच्या वाढीवर, ज्वारीच्या वाढीवर, कापसाच्या वाढीवर हा सारखाच परिणाम होणार आहे असं तुम्ही म्हणताय. त्याला काय म्हणायचं? नल हायपोथेसिस म्हणायचं. Impact of temperature was same, not significant. Yes. Next one. सर ते व्हॅक्सिनचा जे इफेक्ट आहे ना सर, हा, तो यंग वन्स आणि तो ओल्ड म्हणजे सारखाच- पीपल आहेत, हा, म्हणजे 1% किंवा 2% जरी धरलं त्याच्यामध्ये की काही इफेक्ट होऊ शकतो ज्यांच्या तब्येतीनुसार, तर त्याच्यात म्हणजे हे येऊन जाईल का नल हायपोथेसिस? नाही, आपण मानते वेळेस नल हायपोथेसिस मानायचं. बट आफ्टर द रिसर्च डेटा की समटाइम युअर रिसर्च हायपोथेसिस, नल हायपोथेसिस वॉज रिजेक्टेड. मीन्स बिफोर द कंडिशन, that is my opinion, but after, my opinion will be changed after the data collection, after the testing of your research hypothesis, that was changed after the strong evidences, after the strong predictions, that was not true, but my hypothesis is there, null hypothesis. Yes, Ashish. Okay, Any sir. question? Possibilities of coming head or tail before tossing a coin. Yes. That was same. म्हणजे हेड पडू शकतं, टेल पडू शकतं. किंवा समटाइम माय प्रेडिक्शन इज बिफोर द माय प्रेडिक्शन, आफ्टर द रिसर्च एक्सपेरिमेंट की रिसर्च रिझल्ट वॉज डिफरंट पोझिशन, म्हणजे वेगळे सुद्धा असू शकतात. बरोबर आहे की जसं आता ह्यांनी कृष्णाने सांगितलं की सर हे कॉन्ट्रॅक्टवर आहेत. मी बोला म्हणजे मी नंतर त्यांना माहिती पुरवली, त्यांना ऑर्डर दिली किंवा विद्यापीठाच्या वेबसाईटवर त्यांना जाऊन दाखवलं की निष्कर्ष अंदाज चुकू शकतो. किंवा मी आता अंदाज म्हणलं की 44 पैकी 44 पास होऊ शकतात, किंवा मुलं आणि मुली सारखंच पास होऊ शकतात परीक्षेमध्ये, परंतु निकाल लागल्याच्या नंतर माझा अंदाज खराही ठरू शकतो, खोटाही ठरू शकतो. की समटाइम युअर हायपोथेसिस युअर प्रेडिक्शन वॉज सिग्निफिकंट और समटाइम युअर प्रेडिक्शन वॉज नॉट सिग्निफिकंट. इजंट इट? इट वॉज देअर. बरोबर आहे. म्हणजे अंदाज खराही ठरू शकतो, अंदाज खोटाही ठरू शकतो. आणि ही माहिती संकलित झाल्याच्या नंतर, माहितीचं विश्लेषण केल्याच्या नंतर तुमचा अंदाज तपासून पाहावा लागतो. After the research data collection, you want to test research hypothesis. Sometime hypothesis will be a significant, or sometime your hypothesis was not significant. But sometime your prediction was true, or sometime your prediction was fail. मी असं म्हटलं की सारखाच परिणाम होणार आहे, किंवा आता शीतल असं म्हटलं की टेम्परेचरचा सारखाच परिणाम होणार आहे, परंतु वास्तवामध्ये वेगळं सुद्धा होऊ शकतो. ज्वारीची वाढ कमी झालेली आहे, कापसाची वाढ जास्त झालेली आहे, किंवा गव्हाची वाढ आणखी मध्यम झालेली आहे, असं सुद्धा होऊ शकतं. That was will be there. Whatever may be, that time your prediction was changing position. That time you reject the null hypothesis and select the alternative hypothesis. Select the actual condition of after the experiment. That condition you want to accept. मला वाटलं होतं की पेशंट वाचेल, डॉक्टरनं ऑपरेशन केलं. Before the operation, that is my prediction. But after the experiment, that patient was died. That condition will be accept. That time you want to change your prediction. You reject your null hypothesis and accept your alternative hypothesis. म्हणजे अंदाज चुकला तर जे वास्तव परिस्थिती आहे ते तुम्हाला कन्सिडर करावं लागते. समजा हा आशिष आहे, आणि आशिष काय की त्याच्या गल्लीतल्या एका मुलीला काय केला की तो दररोज भेटतो आणि त्याची मैत्रीण आहे, आणि त्याला वाटलं की ती मुलगी त्याच्यावर प्रेम करते. डोंट थिंक अदरवाइज, ऑल यू आर मॅच्युअर रिसर्च स्कॉलर. आणि आशिषने काय केलं की त्या मुलीला जाऊन एके दिवशी प्रपोज केलं, आणि त्या मुलीने काय केलं की चप्पल त्याला मारलं. आशिषचा अंदाज काय झाला? खोटा ठरला. अगोदर काय वाटलं होतं आशिषला की ती मुलगी त्याच्यावर प्रेम करते. बिफोर द एक्सपेरिमेंट that prediction is different. After the research data analysis or testing of your research hypothesis, your research prediction was rejected, not significant, not true. Means you reject your research hypothesis and accept your whatever may be a true condition. मग आशिषला काय करावं लागेल? जी परिस्थिती आहे ती परिस्थितीला मान्य करावी लागेल. की सेम कंडिशन इन द रिसर्च प्रोसेस, whatever may be experiment, you tentative answer of the experiment, whatever may be after the experiment, whatever may be a condition, that condition should be accepted. Means sometime
some researcher n number of research hypotheses formulate and m number of research hypotheses rejected. Anyone can find out the real answer of that prediction. म्हणजे गेली 40 वर्ष झालं HIV व्हायरसवर अनेक शास्त्रज्ञ अनेक अंदाज मांडतायत आणि रिजेक्ट करतायत, अनेक अंदाज मांडतात, तपासून पाहतात, रिजेक्ट करतात, अनेक अंदाज मांडतात, तपासून पाहतात, रिजेक्ट करतायत प्रत्येक जण, की नो एनीवन कॅन फाइंड आउट दी सिग्निफिकंट हायपोथेसिस. म्हणजे असं मला वाटलं की हे गाजर गवताचं आणि हे बाबळीचं आणि हे लिंबाचा पाला एकत्र करावा आणि ते HIVच्या पेशंटला द्यावा आणि तो त्यामुळे बरा होईल. मी काय करणार, ते हे 3 प्लांटचे एक्स्ट्रा एकत्र करणार आणि त्या पेशंटला हे करणार, पाजवणार आणि नंतर मग तिची काही टेस्टिंग करणार, तो पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह झालाय का, आणि पुन्हा अंदाज चुकला तर पुन्हा असे रिजेक्ट करणार. असे हजारो अंदाज मांडले जातात आणि हजारो अंदाज रिजेक्ट सुद्धा होऊ शकतात इन युअर रिसर्च प्रोसेस, isn't it? As far as the concern of null hypothesis, whatever may be a impact, 2 or more than 2 factor, 2 or more than 2 group, 2 or more than 2 layer, that impact is same. That impact was not significant. That situation, that condition reflect in your statement. That statement is considered as a null hypothesis. Yes, are you understand? Yes, my. Yes, sir. शून्य परिकल्पना संकल्पना समजली का? नल हो. Yes, yes. Yes, Sayyid ji, any question? सर सॉरी बट नल हाइपोथेसिस का थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे क्या? नल हाइपोथेसिस और सर लाउडली नल हाइपोथेसिस नहीं समझा अभी सर. नल हाइपोथेसिस, आर यू अंडरस्टैंड नल हाइपोथेसिस? आपको समझ में आ गया नल हाइपोथेसिस? नो सर, सॉरी सर. You belong from which subject? Commerce sir. Okay, means whatever may be a condition, means nationalized bank and non-nationalized bank, these are the depending variables. Two independent, the impact of Indian government policy on nationalized bank and non-nationalized bank, that impact was not significant. That type of statement you want to consider as a null hypothesis. इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसका असर नेशनलाइज्ड बैंक और नॉन नेशनलाइज्ड बैंक पे सेम गिरने वाला है, सेम असर होने वाला है. जो सिचुएशन है आपने आप बिफोर द एक्सपेरिमेंट ऐसा स्टेटमेंट किया है, को आप नल हाइपोथेसिस सकते हैं. National government policy, the impact of national government on nationalized bank or non-nationalized bank, that was not significant, that was same. That type of condition reflect in your null statement, null hypothesis, that consider a null hypothesis. तो फिर आपको जानना पड़ेगा कि क्या इम्पैक्ट गिरा है, नेशनलाइज्ड बैंक पे क्या गिरा है, नॉन नेशनलाइज्ड बैंक पे क्या गिरा है. आपने जो प्रेडिक्टेशन किया था वो सेम गिरने है, मगर सेम गिर सकता है इम्पैक्ट और सेम नहीं भी गिर सकता है. यस, समझ में आ गया जी? आर यू कंफर्ट? यस सर. यस, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है. Hypothesis, which time research hypothesis, main hypothesis, whatever may be your main hypothesis, complex hypothesis, empirical, accept be after. Sir, your voice is breaking. सर वॉइस नहीं आ रही है सर. आवाज नहीं आ रही, कर लिखो ना, कमेंट करो डाल दे, कोई भी चुप आवाज काट
Yes, Sayed ji. Now is it audible? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, सॉरी. अभी आ रहा? हाँ, यस सर, यस. Okay. My screen is visible now. Screen. Yes sir, yes. Yes. Fifth one is alternative hypothesis. Whatever may be your predictions, your prediction was rejected and you accept the real condition. That time researcher use a alternative hypothesis. Means first prediction is you are rejected, and then you want to accept the real condition. Whatever may be post facto condition, that condition you want to accept in your research process, that considered as a alternative research hypothesis, isn't it? Whatever may be a true condition. Before your experiment, your prediction was rejected. After whatever may be situation, that situation you accept, that considered as a hypothesis. ठीक आहे. म्हणजे कुठली असेल जी वास्तव परिस्थिती आहे, ती वास्तव परिस्थिती आपल्याला स्वीकार करणे. जसं आता आशिषला वाटलं होतं की ती मुलगी तिच्यावर प्रेम करते, पण ती करत नाही, तिने रिजेक्ट केलं. मग जे रिजेक्ट केलेली ही जी वास्तव परिस्थिती आहे, ती आशिषनं ऍक्सेप्ट करणं, दॅट इज कन्सिडर ॲज अ अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. मला वाटलं होतं की असं केलं तर असं होण्याची शक्यता आहे, पण तसं झालं नाहीये. दॅट टाइप ऑफ सिच्युएशन यू वॉन्ट टू ऍक्सेप्ट. Means whatever may be after the experiment, sometime researcher formulate before some researcher did not formulate a hypothesis. Whatever. Sir, sorry, but jump हो रहा है आपका आवाज. अभी भी जंप हो रहा. हाँ सर. नेटवर्क का इश्यू. अभी आ रहा? अभी भी नहीं आ रहा. हाँ सर. नेटवर्क का इश्यू सम. ओके. Yes. ठीक. Okay, alternative hypothesis means whatever may be your conditions, the final condition of the experiment or final truthness of your experiment, that will be a accept. Before prediction, you formulate hypothesis, consider as a alternative hypothesis. And last one is a causal research hypothesis. Causal research hypothesis, sometime some criminological research student or some journal or some research scholar was use a causal research hypothesis, or sometimes some survey research method, means post facto research methods or research use a causal research hypothesis. Causal means after that evidences, after that incident, what was the main reason of that factors, to find out the relationship between cause and effect. That time researcher use the causal research hypothesis. Yes. Tumba, any difficulty, any question? म्हणजे घटना घडून गेलेली आहे, मग कोण कारण आहे, what was the reason of that factors after that incident to deal. ऍक्सिडेंट झालेला आहे, डेथ झालेली आहे, मग चूक कोणा, टू व्हीलरवाले किंवा एखाद्याचा मर्डर झालेला आहे, मर्डर केला आहे, दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ कॉजल हायपोथेसिस. शियामध्ये जेवढे काही अंदाज मांडले जातात, तर्क मांडले जातात, ते दया, तोड दो दरवाजा वगैरे, that all that hypothetical statement is considered as a causal research hypothesis. कार्याच्या पाठीमागं कोणतं कारण आहे, you want to find out the relationship between cause and effect. That time researcher use a causal research hypothesis, isn't it? What was the reason behind that evidences, behind that accident, behind that situation? You want to analyze that prediction. That time researcher use causal research hypothesis. Suppose दो कंपनी के शेयर बहुत नीचे गिर गए हैं, उसका रीजन क्या है? That time researcher use causal रीजन के मुताबिक ये दो कंपनी का शेयर जो है वो गिर चुके हैं, बरोबर आहे. बॉटनीचा असेल आणि त्याच्या काय झालं, व्हॉट वॉज द रिझन, कॉजल, की आता आमच्याकडे तो कापसावर लाल्या आला, नंतर सोयाबीनवर तो काहीतरी व्हायरल डिसीज कुठला तरी आला. व्हॉट वॉज द
reason of that disease, that use a causal hypothesis. म्हणजे कापसावर लाल येण्याच्या पाठीमागे काय कारण आहे, किंवा त्या सोयाबीनवर तो व्हायरल डिसीज येण्याच्या पाठीमागे काय कारण आहे, दॅट टाइम रिसर्चर यूज अ कॉझल रिसर्च हायपोथेसिस. इजंट इट? म्हणजे कार्याच्या पाठीमागे कोणतं कारण आहे. किंवा मग जर्नलिस्ट काय करतात, एखादा एव्हिडन्स झाल्याच्या नंतर, किंवा मग भूकंप झाला तर भूकंप कोणत्या ठिकाणी झाला काय नाही वगैरे वगैरे, किंवा एखादी हानी झालेली आहे, तर आफ्टर दॅट इन्सिडेंट यू वॉन्ट टू डील what was the relationship between cause and effect. That time researcher use a causal research hypothesis. बरोबर आहे की जनरली इन criminology or criminal psychology or legal studies research scholar or environmental studies research scholar or journalism research scholar was use a causal research hypothesis. What was the reason behind that cause? You want to deal that factors. That time researcher use a causal research hypothesis. बरोबर आहे. म्हणजे कार्याच्या पाठीमागे काय कारण आहे, जसं आता आशिषने हात वर केला, आशिषने हात वर करण्याच्या पाठीमागे काय कारण आहे, त्याला काही क्वेश्चन आहे का वगैरे वगैरे, असा अंदाज मांडणं, दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज अ causal research hypothesis. Anything regarding that causal research hypothesis? अलग लक्षात? Yes, sir. Yes. Sure, sir. Anyone tell me one example? कोणी उदाहरण सांगू शकेल का causal research hypothesis चं? Yes. सर एखादी कंपनी जर बंद पडली असेल तर ती कशामुळे बंद पडली त्याचं एखादं उदाहरण. राईट राईट. म्हणजे कशामुळे बंद पडली, हायपोथेसिस, एखादा कारखाना बंद पडला किंवा कंपनी बंद पडली, व्हॉट वॉज द रीजन बिहाइंड दॅट इव्हेंट, बिहाइंड दॅट रीजन. बरोबर है, 100% बरोबर है. सर अभी जो प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, यस यस यस, प्लेटलेट्स क्यों कम हो रहे हैं, फाइंडिंग द उसका रीजन क्या है? हाँ, डेंगू हो गया है और चिकनगुनिया हो गया है, या दूसरा कोई डिसीज हो गया है, या वायरल है, उसका रीजन टाइम यू हाइपोथेसिस 100. नेक्स्ट वन. The effect of pollutants on respiratory system. causal hypothesis मध्ये येतं. Yes. Reasons behind the unemployment of students. बराबर है, वो भी causal hypothesis में आएगा. Yes. Yes, generally these are the 6 types of research hypothesis. First one is a simple research hypothesis, second one is a complex research hypothesis, third one is a empirical research hypothesis, fourth one is a null research hypothesis, and fifth one is a alternative research hypothesis, and sixth one is a causal research hypothesis. These are the 6 types of research hypothesis generally used in your which and every research discipline or each and every research subject. Yes, are you understand all that 6 conceptual understanding? Yes, sir. 1000% one questions will be asked in 2014 course examination. बॉन्डवर लिहून घ्या, 1000% ह्याच्यावर एक प्रश्न येणार आहे. नेक्स्ट वन इज a set of null or alternative hypothesis आपण बघितलेलं आहे. A set of significant level 0.01 or 0.05 हे पण बघितलेलं आहे. Make a one tail prediction or two tail prediction. One side prediction or two side prediction. A two tail prediction. आवाज जंप होतोय. आवाज नाही. Yes. Okay. आवाज अभी सर. yes. अभी आ रहा? Yes, sir. Yes. Yes. Means one side impact you consider in your research process or two side impact you consider in your research process. That is one tail prediction or two tail prediction. म्हणजे मी 44 पैकी किती जण पास झाले research crack in first attempt coursework, consider research that one tail prediction. Or pass student or fail student, both side predictions, both side response, I want to consider in my research process.
that time I want to use a two-tail predictions, positive impact as well as negative impact. Both impact I want to consider in my research process. That is called a two-tail prediction. म्हणजे कंपनीला फायदा झालेल्या कंपनीचा मी विचार करणार आहे आणि तोटा झालेल्या कंपनीचा मी विचार करणार आहे. दॅट इज अ टू टेल प्रिडिक्टेशन. फक्त फायदा झालेल्या कंपनीचाच मी विचार करणार आहे, तोटा मी कन्सिडर करणार नाहीये माझ्या संशोधनामध्ये. वन टेल प्रिडिक्टेशन इजंट इट. म्हणजे मी फक्त आय वॉन्ट टू यूज अ ओनली पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट वॉज कन्सिडर इन माय रिसर्च प्रोसेस. Positive as well as negative, whatever may be a impact, both side impact I want to deal, I want to consider in my research process. That is a two-tail prediction. म्हणजे माझ्या शिकवण्यामुळे पास बी होऊ शकतात आणि नापास बी होऊ शकतात. दोन्हीचा विचार मी माझ्या संशोधन करणार आहे. दॅट इज अ two-tail prediction. One tail prediction only prediction isn't means whatever may be your research design, whatever may be your research prediction, one tail prediction or two tail prediction, that depend upon the your research hypothesis. म्हणजे तुम्ही दोन्ही गोष्टीचा विचार करणार आहेत का फक्त एका गोष्टीचा विचार करणार आहेत, एका साईडचा विचार करणार आहेत का दोन्ही साईडचा विचार करणार आहेत, याच्यावर डिपेंड आहे वन टेल प्रिडिक्टेशन और टू टेल प्रिडिक्टेशन. यस, एनी डिफिकल्टी आहे काय अडचण या सर्व याच्यावर बाबीवर? No, sir. येस, जर नसेल तर काही प्रश्न विचारतो आणि आपण पुढे जाऊयात. हनुमंत, ज्ञानेश्वर, सोनटके, अरविंद क्लास. मोहिनी जी, अरविंद क्लास. प्रतीक्षा, राहुल, नाही हे फक्त डिवाइस जॉईन आहेत. That is a demerits of online teaching learning process. Yes, anyone tell me 6 types of research hypothesis? कोण सांगतं? Hypothesis चे 6 प्रकार. Types of research hypothesis. Simple. Yes. Simple yes, hypothesis, complex hypothesis, empirical hypothesis, alternative hypothesis, null hypothesis, and causal hypothesis. Nice, shabas. Very nice. These are the 6 types of research hypotheses generally used. Yes. Bala Sahib. सर ऍक्च्युली याच्यावर जर प्रश्न आला तर आन्सर कशी लिहायचे, म्हणजे एक्सपेक्टेड काही फक्त त्याच्याबद्दल त्याची इन्फॉर्मेशन आणि एक पीडीएफ जी एक्झाम्पल. आहे, जी पीडीएफ जी आहे त्या गुगल ड्राईव्हच्या लिंक मधली पीडीएफ सर्व डाउनलोड करायची किंवा भरपूर सारं लिखित स्वरूपामध्ये इन्फॉर्मेशन आहे. गुगलवर जायचं, टाइप्स ऑफ रिसर्च हायपोथेसिस पीडीएफ एक संपूर्ण किंवा हायपोथेसिसवर 300 पेजेसचं पुस्तक सुद्धा अवेलेबल आहे. सर्व ई बुक्स अवेलेबल आहेत किंवा CR कोठारी रिसर्च मेथोडॉलॉजी ई बुक्स आहेत, ते सुद्धा फ्री डाउनलोड करू शकता तुम्ही. किंवा त्या सर्व एक 7-8 पुस्तकं रिसर्च मेथोडॉलॉजी त्या गुगल ड्राईव्हच्या लिंक मध्ये ऑलरेडी दिलेली आहेत आणि अगोदरच्या सर्व प्रश्नपत्रिका ज्या आहेत त्या सुद्धा आहेत. त्याच्या अनुषंगाने तुम्ही काय करायचं, अभ्यास करायचा. हायपोथेसिसवर 1000% 2024ला प्रश्न राहणार आहे. त्याच्यामुळे हे डीपली अगोदरच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये व्हॉट इज हायपोथेसिस, explain the characteristics and types of research hypothesis. What is hypothesis? Explain the role of hypothesis in research process. That is application level question. That type of questions will be asked, or in previous examination that type of questions asked frequently and repeated. 2017ला विचारलेला आहे, 19ला विचारलेला आहे, 21ला विचारलेला आहे, 14ला विचारलेला आहे, 13ला विचारलेला आहे. ह्या सर्व प्रश्नपत्रिका तुमच्याकडे आहे. मी म्हणतो म्हणून माझ्या विश्वास ठेवू नका. As a researcher, being a researcher, you want to cross check again and again, and strong evidences, it is most essential
प्रोसेस. सबळ पुरावा असल्याशिवाय कुठल्याही शिक्षकाच्या कोणत्याही स्टेटमेंटवर विश्वास ठेवायचा नाहीये. बरोबर आहे. तुम्हाला क्रॉस चेक करायचे, विद्यापीठाची प्रश्नपत्रिका आहे का, विद्यापीठाचा तो लोगो आहे का, विद्यापीठाच्या कोणत्या महिन्यातला तो परीक्षा झालेली आहे की विद्यापीठाचा फॉर्मॅट तो आहे का, हे सर्व क्रॉस चेक करून you want to check the internal validity and external validity of that research information or that research evidences, then and then you believe that research evidences. बरोबर. जसं एखादी 500ची नोट असेल ती खरी आहे का खोटी आहे, आपण काय करतो ती क्रॉस चेक करतो आणि नंतरच घेत असतो. तसं कुठलीही माहिती ही खरी आहे का खोटी ही तुम्हाला तपासून पाहावी लागते. आणि 90% ही जी माहिती आहे ही आर्टिफिशियल किंवा फेक असू शकते. 90%. ज्यांनी 3 वेळेस कोर्स वर्कला नापास झालेला आहे अशा माझ्या विद्यार्थ्याचे मार्केटला पुस्तकं आहेत आणि त्यांनी भरपूर पैसे कमवलेले आहेत. तो त्याचा कमवण्याचा धंदा आहे. दॅट वॉज डिफरंट. बट कंटेंट व्हॅलिडिटी ऑफ दॅट बुक्स यू वॉन्ट टू, ॲज बिईंग अ रिसर्चर, यू वॉन्ट टू चेक अगेन अँड अगेन अँड देन यू अडॉप्ट दॅट रिसर्च इन्फॉर्मेशन. किंवा टीईटी असेल किंवा एमपीएससी असेल, असे 7-8 विद्यार्थ्याचे मार्केटला माझ्या पुस्तकं आहेत. एकाही वेळेस तो टीईटी पास झालेला नाहीये, एका वेळेस तो एमपीएससी मध्ये गेलेला नाहीये. फक्त पहिलं कव्हर तो चकचकीत करतो आणि नंतर रिसर्च इन्फॉर्मेशन 2 दिवसामध्ये तो पुस्तक तयार करतो आणि कमीत कमी 1,70,000 रुपये त्यांनी पैसे कमवले. एकही मुलगा त्याचा पास झालेला नाहीये. म्हणजे कंटेंट व्हॅलिडिटी ऑफ दॅट बुक यू वॉन्ट टू चेक व्हॉट एव्हर मे बी ट्रुथनेस ऑफ दॅट रिसर्च कंटेंट व्हॅलिडिटी बिईंग अ रिसर्च. ती माहिती जी आहे खरी आहे का खोटी आहे ही तुम्हाला पाहावी लागते. and errors of that research information that will be affecting on research quality. म्हणजे जर माहिती चुकीची असेल तर निष्कर्ष चुकीची येणार आहे. मग माहिती ही तपासून पाहणं गरजेचं आहे. त्याची आंतरिक वैधता व बाह्य वैधता ही दोन्ही तपासून पाहिल्याच्या नंतर 100% शुद्धता करून माहिती तुमच्या संशोधनामध्ये तुम्हाला वापरावी लागते. येस, एनी डिफिकल्टी? ठीक आहे काय अडचण? आवाज येतोय? नो सर. Yes, sir. Yes. Yes. Internal validity and external validity of research result. Generally, after the formulating a research hypothesis, generally these are the 3 type of research circle used in your research process. First one is sample, then population, and then universal. Sample is the actual part of the population that was participate in your research process. म्हणजे पॉप्युलेशनचा जो घटक आहे तो प्रत्यक्ष संशोधनामध्ये सहभागी आहे. That part considered as a research sample. Small area of population that was actual participate in your research process, that part, that factors considered as a research sample. And the universal is a very big thing in research process. Yes. Yes. Sorry for disturb. Sample, population, and universal. These are the 3 terms generally used in your research process. So many times used on a short note form. What is sample? What is the research population? What is universal? Explain the population, types of population. That type of short note questions in previous examination. म्हणजे न्यायदर्श म्हणजे काय, किंवा जनसंख्या म्हणजे काय, किंवा विश्व म्हणजे काय, किंवा युनिव्हर्सल म्हणजे काय, अशा प्रकारचे शॉर्ट नोटचे प्रश्न आलेले आहेत. द कन्सेप्ट ऑफ सॅम्पल मीन्स व्हॉट एव्हर मे बी अ स्मॉल एरिया, स्मॉल फॅक्टर्स दॅट विल बी ऍक्च्युअल पार्टिसिपेट इन युअर रिसर्च प्रोसेस दॅट कन्सिडर ॲज अ सॅम्पल. His sample techniques are different, sample types are different. As per the concern of sampling errors and sample concept. And research population. Research population considered as a whole research area.
homogeneous research population, heterogeneous research population, finite research population, infinite research population, countable research population, uncountable population. The 6 types of research population generally used in your research process. And after the getting population, after the forming your research population, after forming your research sample design, you consider a all universal value, isn't it? And which types of research sampling techniques and which types of research population design and how to make relationship between population and sample, and how to select a ideal, representative, and relevant research sample through select a research population, isn't it? We deeply discuss in tomorrow session. Again, another long question will be asked on sample or sample size or sample techniques or research population. Okay. Thank you. Any types of research hypothesis, variables, depending variables, independent variables, 0.05 testing. आहे काय अडचण? No, sir. No, sir. स्टुडंट आयडियल रिसर्च स्कॉलर म्हणजे फक्त ऐकणं आणि विसरून जाणं, किंवा मग मी जरी किती कॉल केले न देणं. बरेच जे आहेत न्यूट्रल लर्नर्स इज देअर. ओके, थँक्यू. उद्याच्याला पुन्हा 11 वाजता भेटूयात नवीन टॉपिक घेऊन. येस, हा, आज थोडा नेटचा प्रॉब्लेम आहे. ओके, थँक्यू. इथं थांबूयात आपण. एनी क्वेश्चन्स रिगार्डिंग दॅट कंटेंट? येस सर. ओके, थँक्यू. मराठी सर, थांबूया इथं आपण. ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लेम सर. हॅलो. येस, हॅलो. ओके, थँक्यू सर. Okay, sir, thank you very much for sparing your valuable time for our students. We are really fortunate to have with us on this topic. So on behalf of all the participants and behalf of Research Committee Science College Nanded, I must express my gratitude towards Dr. Gingine sir for sparing his valuable time, and also for sharing your hard disk link of your Google Drive. Because it includes all the question papers, all the notes, and study material related with the research methodology and all aspect of PhD coursework. So thank you very much, sir. Hello. 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 सर, दुसरे गेस्ट कोण आहेत? अभिमन्यू माहेश्वरी. Sir. Hello, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I request Dr. Gingine sir, please stop sharing. Sir, Dr. Gingine sir. नेटवर्क प्रॉब्लेम होता सरांना, नेटवर्क नसेल. हो का? बरोबर. Okay, thank you, sir. Thank you. Dear participants, today we have with us for this second lecture of this morning session, Dr. Abhimanyu Maheshwari. Dr. Abhimanyu Maheshwari is working as assistant professor at Department of Botany, Bajaj College of Science, Wardha. He has completed his MSc from Government Vidarbha Institute of Science and Humanities, Amravati. He is also CSIR NET, IIT GATE, and he has also completed PhD from Sant Garge Baba Amravati University, Amravati. He has 4 years of teaching experience and near about 9 years of research experience. He has published more than 10 research papers in national and international peer-reviewed journals. He has published 1 book chapters
and his area of specialization is phytochemistry, plant systematics, biodiversity, and ethnobotany. He has also received certain prestigious awards, like he is a gold medal, which is awarded by Sant Gargi Baba Amravati University, Amravati, for securing highest mark in MSc Botany. Again, he has awarded with best research student in 2017 at Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science, Akola. So, dear participants, today we have a very renowned personality with us, Dr. Abhimanyu Maheshwari. He has accepted our invitation, and beside of his busy schedule, he is accepting our invitation and delivering his talk to our students. So, on behalf of all the research students and behalf of Research Committee, Science College, Nanded, I express my gratitude towards Dr. Abhimanyu sir. Welcome, sir, for this today's PhD coursework. And I request Dr. Abhimanyu to start your presentation. Abhimanyu, sir. Yes, sir. I'm audible, sir? Yes, yes, you are. Okay. Thank you, sir, for introducing me to the students. And sir missed a small part in that I am his junior of GVSH Amravati. So that is one of my qualification as well, so that all the students may know. So we are, Dr. Vishal Marathe is an inspiration, as well as he is a very helping hand for us. So actually it is your availability that you have such a good person with you, such a intellectual person with you to guide you. Okay. Sir, which language will be comfortable for the students? No Marathi, problem. Hindi. You may use Marathi, Sir, Hindi, English, English. Hindi. Yeah. Okay. Yeah, Okay. only one, Abhimanyu, only one, I think, is there. I think Banu. She doesn't understand Marathi. Okay, so Hindi. Preferably you use Hindi. Okay, Or maybe Marathi also, no problem. Okay. So I will be using all the three languages, as the topic of today's is very much interesting one, because we all are being registered, or all are pursuing PhD, and in PhD courses the publications are very important. So whenever we publish anything, why it is important, how it should be done, and what are the norms we should follow, what are the things we should follow. Okay, आप रिसर्च करते हो, रिसर्च करना, हम रिसर्च करना किस तरह से करना है, उसके अंदर कौन से चीजें हमको ध्यान रखनी है, ताकि हमारा पब्लिकेशन जो रिसर्च के बाद बने वो अच्छा हो. Okay, रिसर्च करना is a different part, and publishing it with properly and following all the ethics in it is a different part. Okay, हम सब रिसर्च करते हैं, everyone is a researcher here. No research is bad, no research is good, no research is big, no research is small. Every research is equivalent, just the topics are different. Okay, so first of all, we should feel that we are doing the good research. Okay, and now everything starts afterwards. So ethics, now ethics are something which we are facing all around the year. Okay, ethics हमारे हर चीज में रहते हैं. एथिक्स हमारे घर के प्रिंसिपल्स में है, एथिक्स हमारे बिहेवियर में है, हम सोसाइटी में जब जाते हैं तब एथिक्स फॉलो करते हैं. ओके, हम हमारे जो वर्किंग प्लेस पे एथिक्स फॉलो करते हैं. सो डिफाइनिंग इट इन अ टेक्निकल लैंग्वेज, इट इज अ फिलोसॉफी, ओके, which is involving systematic defending and endorsing conceptions of good and bad actions. Okay, now right from our childhood we have been giving certain instruction that do this, this is good, do that, that is, don't do that, that is bad. यही करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए तो अच्छी बात है, ये नहीं करोगे तो वो बुरी बात है, ये नहीं करना चाहिए, and so on. We teach our children. Okay, when we were children we were taught the same things and we are continuing. So ethics is something which we are very much frequent. Okay, so ethics ये word जो है हम उससे familiarized है. Okay, so यही ethics को हम particularly हमारे publication में जब include करते हैं, हमारे research में जब include करते हैं, तो हम उसको रिसर्च एथिक्स या रिसर्च और पब्लिकेशन एथिक्स ऐसा उसको नॉमेनक्लेचर करते हैं. ओके, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हेन यू आर पब्लिशिंग एनीथिंग, दैट सर्टेन थिंग्स आर प्रॉपर्ली डन. ओके, जो वैसे ही करने चाहिए, गुड एक्शन बोलते हैं या गुड थिंग्स बोलते हैं. और देयर आर सम थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी डन, व्हिच शुड बी अवॉइडेड, एंड यू शुड टेक केयर व्हाइल डूइंग योर पब्लिकेशन, उसको हम पब्लिकेशन एथिक्स बोलते हैं. सो द प्रोज
what to do and what to don't do, what not to do in while doing a publication. It is the concise thing of publication ethics. Okay. Then research, it is a creative and systematic activity which is undertaken to enhance the reservoir of knowledge, and that is how research is defined. Okay. Now research, हम different fields से हम research करते हैं. Okay. Arts में research का topic different होता है. कॉमर्स का अगर कोई टॉपिक होगा तो अलग होगा. साइंस में एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी होता है. आप किसी इसमें करोगे, कभी सर्वे बेस्ड एक्सपेरिमेंट करोगे, आप एक हाइपोथेसिस पोस्टुलेट करते हो, फिर वो हाइपोथेसिस का नल हाइपोथेसिस डालते हो, फिर उसके बाद में देखते हो कि आउटकम दूसरा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कौन सा होगा, और फिर हम उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए या उन हाइपोथेसिस को असेस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं, सर्वेस करते हैं, कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं एंड ऑल दैट. ओके. तो हमारा जब पूरा वर्क हो चुका हो, okay, after doing a research, it is very much mandatory or in the curriculum of our research for the minimum award or for the completing the degree of PhD, we need certain publications, we need certain presentations in conferences. Okay. And as well as while we are giving our report of our research, we require a thesis submission as well. Okay. So during research, during and at the time of submitting your research, there are certain rules which have been framed and which should be followed time to time. Okay. So research ethics are defined to be the ethics of the planning, conduct, and reporting of the research. Okay. Now, why they are meant, why these particular research ethics are been given by the society or the international conventions, so that there should be no misconduct. Okay. Every author which is participating or has done research should get its acknowledgement, and there should be no falsification of a fabrication of data. आपको कोई भी अडल्ट्रेटेड रिसर्च कंसेप्ट मिलना नहीं चाहिए. जिसने काम किया है उसको प्रॉपर एप्रिसिएशन मिलना चाहिए. इसीलिए उस और while doing research हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, किसी के हेल्थ से, किसी के एग्जिस्टेंस से, किसी के आइडेंटिटी से खिलवाड़ नहीं होगा. इस बात का कंसाइज मैटर को हम एक वर्ड में या एक टर्म में डालते हैं, उसको हम रिसर्च एथिक्स बोलते हैं. ओके. सो व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिकेशन एथिक्स, simply it is the rules of conduct which we should follow while publishing the results. Okay. Now these results may be of your scientific research or some other scholarly work. It is not mandatory that they will be only of a research experiment or anything. आप जो भी आपका रिसर्च कर रहे हो उसको अगर आप प्रॉपर रूल्स के साथ में पब्लिश करते हो तो इट इज दैट, वो है पब्लिकेशन एथिक्स. ओके. सो पब्लिकेशन करना है, क्यों करना है, कहाँ करना है, किसको देना है, किसके लिए करना है, देयर आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अबाउट. ओके. सो व्हाई रिसर्च शुड बी पब्लिश्ड? बिकॉज publishing of research is important because it should be shared with an other workers or other peoples who are related or will be working on that topic. Okay. If you share your research, it will help others to formulate their research. वो आपका रिसर्च देख के उनको हेल्प भी होगा और वो आपके रिसर्च का गाइडलाइन लेके आगे बढ़ सकते. ओके. देयर इज वन ऑफ द चैप्टर इन आवर थीसिस राइटिंग और इन आवर एमएससी PG dissertation track. After introduction, we give a review of literature. Okay. Are you acquainted with review of literature? Yes or no, you can comment in the comment box, or you just can unmute yourself and say yes or no. Yes sir. Yes. So review of literature क्या होता है एक्चुअली? हमारे टॉपिक से रिलेटेड किसने किसने वर्क किया है हम इसको डिकोड करते हैं. ठीक है. हम वो देखते हैं कि किसने किसने वर्क किया है, किसका वर्क हमारे से सिमिलर है. ओके. और फिर उसके रिजल्ट्स में और हमारे रिजल्ट्स में क्या सिमिलैरिटीज आई है, क्या डिसिमिलैरिटीज आई है, वो. ओके. फॉर एग्जांपल ये करो कि जिसने भी जो रिसर्च किया है, जिसका हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर साइट कर रहे हैं, उसने वो ऑथेंटिकली नहीं किया, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि हम जब उसके रिजल्ट देखेंगे हमको एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलेगी. ओके. सिमिलरली अगर ये हमारे साथ हो रहा है तो हमारा रिसर्च देख के किसी और के साथ भी तो सेम बात हो सकती है. ओके. सो ये जो चीजें होती है कि whenever you are following research publication ethics or research ethics or publication ethics, it is mandatory to be in that required way, because it is going to create an
positive impression or negative impression how you are following the ethics or you are not following. Okay, now we will discuss in the further lecture. We are going to discuss what are the key points you should remember while doing the research or while doing the publications. कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी चीज अवॉइड करनी चाहिए. ओके, स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज देखेंगे. एंड एट एनी प्लेस यू एनकाउंटर अ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. ओके, डरना नहीं है, सोचना नहीं है. अगर आज समझेगा तभी आप आगे जाके रिसर्च का पॉजिटिव इम्पैक्ट बाहर तक पहुंचा सको. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट पब्लिकेशन. अब पब्लिकेशंस क्या होता है कि जब भी हम हमारा कुछ वर्क पब्लिक डोमेन में डालते हैं उसको हम पब्लिकेशन कहते हैं. इट इज ओपन टू ऑल पब्लिक्स. ओके, अब जो वर्क कोई भी हो सकता है, आपका पीएचडी वर्क हो सकता है, आपका एक रिव्यू वर्क हो सकता है. देयर आर डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, तो कैटेगराइजिंग पब्लिकेशंस, there are 4 ways to categorizing. Okay, first of all is your MSc or your, you can say, PG or PhD thesis. Okay, now that is a concise matter or it is a concise report what you have done throughout your research work, okay, which is submitted for evaluation by particular referees who is expert in that related topic. And from that, after assessing and evaluating your that report, which we call as thesis or dissertations, as in case of PG level, at PG level we call it as dissertation and thesis for PhD. उसके evaluation के basis पे referees उसको critical examine करते हैं और आपको बताते हैं कि whether what are the pros and cons, आपने कौन सी चीज अच्छी की है, इसमें कौन सा lacuna रह गया है, whether your research is done properly, and it should be recommended for the award of PhD thesis. Okay, so that is one of the type of publication. Other type of publication is when you publish your work in referred journals. Okay, now okay, referred journals. Now referred journals क्या होते हैं कि journals जो किसी ने recommend किए. Now we have a very one designed way that UGC has given us the list of journals in which you should publish. जिसको हम UGC care listed journals बोलते हैं. Now to understand what are UGC care listed journals, these are the journals who have a good reputation from long years, from few years, that they are publishing authenticated data or they are publishing authenticated works, and that's why the UGC has recommended us to the list in which the publications are done. ओके, अब जब पेपर आप पब्लिश करते हो तो ऐसा तो नहीं होगा जो आपने कंप्लीट रिसर्च किया उसके ऊपर कंप्लीटली आप पेपर पब्लिश करते हो. ओके, आप थीसिस लिखते टाइम आप ईच एंड एवरी डिटेल्स पे कंसंट्रेट करते हो, उसका कोई लैक्यूना छूट ना जाए, हम उस पे. लेकिन जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, एक पब्लिकेशन करते हो, तो उसमें आप फोकस करते हो आपके रिजल्ट्स पे, ना कि आपने क्या क्या फॉलो किया है या कैसे किया. आप इन शॉर्ट उसका मटेरियल्स एंड मेथड डिस्क्राइब करते हो, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देते हो, और कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बजाय एक पार्ट ऑफ स्टडी को वहां पे आप पब्लिश करते हैं. तो उसको हम बोलते हैं पब्लिकेशन इन रेफर्ड जर्नल्स. देन अनदर पार्ट इज द कॉन्फ्रेंसेस, पेपर्स, प्रेजेंटेशंस एंड पोस्टर्स. नाउ व्हाई वी डू प्रेजेंटेशन. अब जब आप पेपर पब्लिश करोगे तो उसका एक रिगरस प्रोसेस होता है. ओके, पहले आप वो उसको आर्टिकल सबमिट करते हो, आर्टिकल सबमिट के बाद हमें उसका एक्सेप्टेंस आएगा, एक्सेप्टेंस के बाद में वो रिव्यूअर्स के पास जाएगा, रिव्यूअर्स उसको एग्जामिन करेंगे, उस पर कमेंट्स करेंगे और उसको 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अगर रिव्यूअर्स को लगता है कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीटली ओके है तो देन दे विल एक्सेप्ट. उनको ऐसा लगता है कि कुछ पार्ट है जो इसमें चेंज होना चाहिए तो उसको वो क्या करेंगे, एक्सेप्टेड विद सम सजेशंस. ओके, देन यू हैव टू रेक्टिफाई, यू हैव टू करेक्ट दोस सजेशन, यू हैव गिव देम इनपुट्स. कभी कभी ऐसा होता है कोई आपका एक्सपेरिमेंट है जिसका रिजल्ट आप डालते हो तो उसका वो प्रूफ मांगते हैं, तो आपको वो प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ता है. अगर आपने प्रूफ प्रोवाइड कर दिया तो आपका आर्टिकल कंप्लीटली पब्लिकेशन में चला जाता है. तो और थर्ड होता है कि रिजेक्शन. अगर रिव्यूअर्स को लगता है कि आपकी स्टडी इज नॉट ऑथेंटिकेटेड, इट इज नॉट प्रॉपर, और ऐसा भी हो सकता है कि वो जो जर्नल में आपने सबमिट किया उसके एम्स एंड स्कोप में आपका पेपर नहीं आ रहा है, जिसके लिए भी रिजेक्ट हो सकता है. It's not necessary that your each and every time your papers are not valid or there are certain misconduct followed in that, but it is not like that कि अगर हर रिसर्च जर्नल का या साइंटिफिक जर्नल का आप
कोई भी किसी भी फील्ड के जर्नल्स का एक एम्स एंड स्कोप होता है कि उनको किस टाइप की स्टडीज वो जर्नल्स में से पब्लिश करना। फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फिजिक्स का एक जर्नल, ओके, और उसके अंदर हमको अगर जूलॉजी का स्टडी डालना है तो वो एक्सेप्टेबल रहेगा? नहीं, क्योंकि वो एम्स एंड स्कोप से मैच नहीं हो रहा। तो वो क्या करेंगे, वो जूलॉजी वाला जो रिसर्च मैन्यूस्क्रिप्ट है उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसको जो जूलॉजी के पर्सन ने जो रिसर्च वर्क किया है वो अनऑथेंटिकेट, उसका ये है मतलब ये निकलता है कि इसके एम्स एंड स्कोप में वो मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए उन्होंने रिजेक्ट। ओके, लेकिन थर्ड टाइप का जो पब्लिकेशन है, जो कॉन्फ्रेंसेस, पेपर्स, प्रेजेंटेशन और पोस्टर्स होता है, कि ये होता है कि जब आप आपका वर्क पब्लिकली किसको एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नाउ व्हेन वी आर अटेंडिंग अ कॉन्फ्रेंस, हम कॉन्फ्रेंसेस जनरली ऐसे अटेंड करते हैं जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, हमारे स्ट्रीम से रिलेटेड हो। वो क्यों होता है कि सेम माइंड के पीपल, सेम सब्जेक्ट के पीपल एक जगह जमा होते हैं, और वहां पे जब आप आपका वर्क प्रेजेंट करते हो तो उससे आपको पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं। ओके, और वो पॉजिटिव रिव्यूज आपके फर्दर वर्क में हेल्पफुल होते हैं। ओके, और ये होता है आपका एक एक्नॉलेजमेंट कि आपका जो वर्क है वो पब्लिकली एक्सेप्ट हो रहा है, कि आपने जो वर्क किया है वो ऑथेंटिक है। जब आप पब्लिकली कोई चीज रखते हो तो वहां पे आपको ऑब्वियसली सजेशंस मिलेंगे, करेक्शंस रहेंगे कुछ। ओके, और एक ये भी होता है कि इन केस आपसे कुछ गलती हो गई हो, कि आपने कोई जो भी रेफरेंस लिया वो गलत हो गया, तो वहां पे वो रेक्टिफाई होने के चांसेस। ओके, so this is another type of publication, and another publication is your popular articles. Now we are in the age of internet. Okay, now research papers, conferences are and thesis, इनके अलावा अलग एक स्ट्रीम चल रही है जहाँ पे पब्लिकेशंस हो गए। पब्लिकेशन न्यूज़पेपर्स में हो सकते हैं, ऑनलाइन ब्लॉग्स में हो सकते हैं, यूट्यूब पे आपका पब्लिकेशन का कुछ ये बन सकता है, वीडियो बन सकता है ना। वो क्या होता है कि वो रिसर्च है, जब उसका कुछ आपका यूट्यूब पे कोई अगर वीडियो बना रहा है तो वो आपको रिसर्च को पोर्ट्रे कर रहा है, सो इट कैन ऑल्सो अकाउंट फॉर इट्स पब्लिकेशन। सो दे आर अनदर टाइप ऑफ पब्लिकेशन। आप किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल दे रहे हो, किसी मैगजीन में आर्टिकल दे रहे हो, ओके, किसी न्यूज चैनल पे जाके आपका वर्क एक्सप्लेन कर रहे हो, रेडियो पे एक्सप्लेन कर रहे हो, यूट्यूब चैनल पे या पब्लिक डोमेन में आप कभी भी कुछ भी आपके रिसर्च का डाल रहे हो, वो भी एक पब्लिकेशन का टाइप होता है। ओके, सो पब्लिकेशंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 डिफरेंट टाइप्स, एंड आउट ऑफ देम particularly research journals, conference papers and PhD thesis are very critical. Okay, moving to further point, now why the quality assessment is done in science publications or in any publications. Okay, first of all, a quality publication enlightens or creates trust and confidence. Okay, now this trust and confidence, it is developed in scientific community among the scientists which are working on the same topic or on different topics. अगर आपका वर्क एथिक्स से जुड़ा है तो वो आपको आपके प्रति ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। इससे क्या होगा कि जब भी आप वर्क करोगे, जो आपसे एक बार ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, आपका ट्रस्ट दूसरों के साथ में बन गया, तो दे विल गिव यू पॉजिटिव सजेशंस, दे विल कोलैबोरेट विद यू। जब इस चीजों की मैचिंग होती है, जब कोलैबोरेट होता है, इससे आपका रिसर्च जो है वो एनहांस होता है। Okay, for example, 2 of the peoples are working on the same plant. Okay, there are 2 peoples, you can consider me one of them, and another is my colleague who is living in some other nation. We both are working on Azadirachta indica. Okay, but if we do not know what his topic is, not they, I do not know what my topic is. But if the country changes and we happen to collaborate with each other, ओके, हम कोलैबोरेशन है वो मेरे लिए अननोन है, तो मैं उससे कोलैबोरेट कैसे करूंगा, मैं देखूंगा उसके रिसर्च पब्लिकेशंस कैसे, ओके, उसके पब्लिकेशंस में क्या है, उसने जो डेटा इंटरप्रेट किया है अभी तक वो कैसा किया है। अगर उसने डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा प्रेजेंटेशन प्रॉपरली किया है, एक साइंटिफिक वे से किया है, एथिकल वे से किया है, तो मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ। सिमिलरली जो मैंने किया है वो भी मेरे लिए करेगा। ओके, जब ये होगा तभी हम कोलैबोरेट कर सकेंगे, और वो कोलैबोरेट होने के बाद क्या होगा कि उसके इंस्टीट्यूट में और मेरे इंस्टीट्यूट में कुछ फैसिलिटीज डिफरेंट होगी। सम फैसिलिटीज आई कैन प्रोवाइड टू हिम, सम फैसिलिटी ही कैन प्रोवाइड टू मी, एंड ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, वी विल हैव अ हाई क्वालिटी रिसर्च इन फ्यूचर. Okay, that will be the outcome of our research, that we will have to
we will happen to explore more number of aspects about that particular plant. Okay, so scientific progress, अब आप जब भी आपके एक जोन से दूसरे जोन में जाओगे तो आपको ज्यादा चीजें सीखने मिलेगी, और सीखने मिलेगी तो आपका रिसर्च जो है वो हाईली क्वालिटेबल बनेगा, आप उसको एक्नॉलेजमेंट ज्यादा मिलेगा। ओके, वैसे भी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को हम बोलते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज हैविंग मोर इम्पैक्ट देन द बेसिक डिसिप्लिन रिसर्च और सिंगल डिसिप्लिन रिसर्च। तो इससे क्या क्रिएट होता है कि साइंटिफिक और सोशल प्रोग्रेस फास्ट होती है, अच्छी होती है, और आपका जो वर्क है वो क्वालिटी वर्क करके एक्नॉलेज होता है साइंटिफिक कम्युनिटी में, या आपका जो वर्क है वो क्वालिटी वर्क करके सब पहचाना जाए। ओके, देन देयर आर सर्टेन वैल्यूज व्हाई वी डू पब्लिकेशन। ओके, कौन से वैल्यूज हमारे पब्लिकेशन से मिलते हैं? सो पहला है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ओके, रिप्रोड्यूसिबिलिटी क्या होती है कि आपका जो वर्क है, आपने जो मटेरियल्स मेथड्स फॉलो किया है वो सही में ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। ओके, सो हमको क्या करना है कि हमने जो किया है, जिस वे से हमको पब्लिकेशंस के अंदर जिस पब्लिकेशन में हम जिस वर्क किया है, हमने जो प्रोटोकॉल फॉलो किया है वो हमको एग्जैक्टली वैसा का वैसा बता, हमने जो नहीं किया वो नहीं बता। उससे क्या होगा कि हमारा वर्क के जो प्रोटोकॉल है और रिजल्ट है वो मैच हो, ताकि इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब कोई और आपका वर्क रेफर करेगा तो ही विल हैव अ श्योर शॉर्ट गाइडलाइंस। ओके, वो गाइडलाइंस उसके पास जो रहेगी, उसको पता रहेगा कि ये इन्होंने वर्क किया है तो इस प्रोटोकॉल से मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। ओके, इन केस हम वो करने में फेल हो जाते, हमने वो नहीं किया, हमने वो एथिकली फॉलो नहीं किया, हमने लिखा कुछ और प्रेजेंट डेटा कुछ और ही कर दिया, तो क्या होगा कि जब भी वो रेफर करेगा, वो आपका प्रोटोकॉल फॉलो करेगा, तो उसको क्या, अरे इससे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, इन्होंने गलत काम किया है, इन्होंने जो रिपोर्ट किया है वो पॉसिबल ही नहीं है, इससे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहे। तो क्या होगा कि आपका जो इमेज है वो उसके अंदर पॉजिटिवली डेवलप होगा। इन अदर केस, इफ उसको अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, जो आपने रिपोर्ट किए वैसे रिजल्ट उसको मिलते हैं, तो वो क्या बोलेगा कि ये XYZ पर्सन का अगर मैं प्रोटोकॉल फॉलो करूँ, इसके रिसर्च पेपर फॉलो करूंगा तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। तो वो क्या करेगा, आपको पॉजिटिवली साइट करेगा, आपका नाम दूसरों को रेफर करेगा, आपके रिसर्च पेपर दूसरों को रेफर करेगा, इससे आपके साइटेशन बढ़ेगी। साइटेशन बढ़ना बोले तो आपका एक्नॉलेजमेंट इन एक साइंटिफिक वर्ल्ड में बढ़ना हो जाए। ओके, आपको ज्यादा से ज्यादा लोग पहचानेंगे, जिसको हम सोशल मीडिया फॉलोइंग भी बोल सकते हैं कि आपकी सोशल मीडिया, एक्चुअली हमारे फिल्म स्टार्स की सोशल मीडिया फॉलोइंग ज्यादा होती है, साइंटिस्ट की कम होती है, लेकिन पब्लिकेशन के अंदर साइंटिस्ट की ज्यादा है और रिसर्च स्कॉलर्स और एक्टर्स की और पब्लिक फिगर्स की कम होती है। ओके, एग्जाम्पल लेंगे तो विराट कोहली का फैन फॉलोइंग बहुत है। ओके, वो एक पोस्ट डाल दे तो पूरा इंस्टाग्राम हिल जाता है, होता है कि नहीं होता? अब वो विराट कोहली के अकाउंट से अगर किसी XYZ पर्टिकुलर दूसरे अकाउंट ने वो क्या कर रहा है कि इधर उधर से विराट कोहली पिक्चर डाल रहा है, विराट कोहली के नाम से खुद ही पब्लिश कर रहा है, तो क्या होगा कि आपका जो भरोसा है, आप फॉलो स्टार्टिंग में दोनों को फॉलो करोगे, लेकिन आपको फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि अरे ये तो गड़बड़ है, ये ऑथेंटिक अकाउंट नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ विराट कोहली। सो आप क्या करोगे, उसको अनफॉलो कर दोगे। आप आपके बाकी फ्रेंड्स को रिकमेंड करोगे, अरे वो पैरोडी अकाउंट है, इट्स अ फेक अकाउंट, होता है कि नहीं? वैसे ही आपका रिसर्च भी अगर आपने ऑथेंटिकेट किया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने पब्लिकेशन में ऐसे ही पैरामीटर्स इंक्लूड करें जो आपने एक्चुअली किए हैं, जिस तरह से किए हैं। ओके, और जब आप ऐसा करोगे तभी आपका रेफरेंस जो भी लेगा, आपके पेपर का जो रेफरेंस लेगा वो उसको पॉजिटिवली लेगा और उसके आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होगा। ओके, second point is verifiable, that your publication should always be verifiable. So whenever we publish a data, that doesn't mean the कि जो हमने वर्क किया है उसके जो प्रूफ्स है वो हम डिस्कार्ड कर सकते। Nowadays in scientific community there have been many predatory journals. आपको लगता है कि आपका जर्नल में पब्लिश हो गया तो वो प्रीडेटरी जर्नल, नंबर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटीज आर इन रिपोर्टिंग फेक जर्नल्स, और उसमें इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज in which fake journals have been reported. Sorry, it's a shameful thing, but it is the fact. इंडिया में प्रेडेटरी जर्नल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना कि ऑथेंटिकेटेड जर्नल्स। ओके, और जब आप ऑथेंटिकेटेड जर्नल में डालते हो तो वो जर्नल आपके डेटा को वेरीफाई करने के लिए कभी भी आपको पूछ सकता है। ओके,
उसके बाद में भी कोई अगर वर्कर है जिसने उसने आपका पेपर का रेफरेंस लिया तो पूछ सकता है कि व्हाट आर द रिजल्ट्स. Okay, so you should always keep the results or the protocols or the reports of your work near about 5 to 7 years from the day of publishing. Okay, ऐसा नहीं होगा कि ऐसा नहीं करना है हमको कि हमारा पब्लिश वर्क हो गया तो हमके जो हमारे पास जो उसके रिपोर्ट्स है उसके जो प्रूफ्स है वो हम उसको डिस्कार्ड करें. ओके, कुछ होते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन फोटोग्राफिक प्रूफ्स, देयर आर सर्टेन सर्वे प्रूफ्स, देयर हैव बीन सर्टेन रिपोर्ट जो हम बनाते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा होता है तो उसको डिस्कार्ड नहीं करना है, उसको रखना है. कितने समय तक रखना है? 5 से 10 साल. कहाँ से? आपके पब्लिकेशन के 5 से 10 साल तक. ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है, ये आपको रखना है. इसका बेनिफिट आपको बाद में ये एथिक्स का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटी, डिपेंडेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो यू शुड वर्क रिस्पॉन्सिबली. आपका रिसर्च है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं. आप जितना ईमानदारी से आपका वर्क करोगे, जितना रिस्पॉन्सिबली आपका वर्क करोगे, वही आपको बेटर रिजल्ट. डिपेंडेबिलिटी, आप दूसरे आप पे डिपेंड करो, ये आपकी कमाई है. ओके, और आपने अगर रिस्पॉन्सिबली वर्क किया है, लोग आप पे डिपेंडेबल हो सकते हैं आपके वर्क पे, तो नेचुरली वो क्वालिटी वर्क हो जाएगा. ओके, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग योर डेटा, आप आपके डेटा को जो प्रेजेंट करते हो तो उसको गोल 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 नहीं करना है, आपको उसको क्लियरली पुट अप करना है कि ये करने से ये रिजल्ट आया है, ये करने पे ये रिजल्ट आया है, फिर इन दोनों को रिजल्ट मिक्स करके मुझे ये आउटपुट है. तो आपके रिजल्ट्स के और आपके डिस्कशन और कंक्लूजन में क्लैरिटी मेंटेन होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे बात बोलनी है किसी और की और बात इंटरप्रेट किसी और का होगा. जो मुझे कहनी है वही सामने वाले को समझे, उसको हम क्लैरिटी बोलते हैं. ओके, for example, I have started describing a public figure, but I am giving the characteristics from of some other one. So you will get confused. साला नाम तो किसी और का लिया है और बता किसी और के कैरेक्टरिस्टिक. ओके, तो ये क्या हो गया कि ये मिस, इसमें क्लैरिटी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही मेरे वर्ड्स में आ रहा है, नाम और डिस्क्रिप्शन मैच नहीं हो रहा, तो इसमें क्लैरिटी नहीं. तो क्लैरिटी कब आएगी? जब आप जो भी रिजल्ट्स आपके आए उसको प्रॉपरली उसका कंक्लूजन निकालेंगे, उसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, और उससे जो मैसेज आएगा कि उसमें समझा कि अच्छा जिसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से ये हुआ, तो अगर सामने वाले को बिना किसी एफर्ट से वो समझ जाए तो उसको क्लैरिटी. सो योर पब्लिकेशन शुड हैव क्लैरिटी. ओके, यू शुड पुट अप योर पब्लिकेशन विद ऑनेस्टी एज वेल एज फुल ट्रांसपेरेंसी. हम ऑनेस्टी, वी आर ऑल ऑनेस्ट बिहेवियर. लेकिन क्या होता है कि कभी कभी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता. ओके, तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है तो नहीं मिला है, मिला है तो मिला है, बस दैट इज ऑनेस्टी. जो है सो है, नहीं मिला है डजंट मीन दैट यू हैव डन एनीथिंग रॉन्ग. ओके, उसका कोई रीजन होगा, वो हमको ढूंढ के निकालना है कि ऐसा रिजल्ट हमको क्यों नहीं मिला. एक्सपेक्टेशन पे हर चीज खरी उतरे ऐसा तो नहीं होगा, ये रिसर्च है. ओके, रिसर्च में जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, कभी कभी नेगेटिव रिजल्ट आए, और नेगेटिव रिजल्ट आए तो ये आपको पुटअप करना है. ओके, उसको ऐसा नहीं करना, इसको ही हम ऑनेस्टी बोलते हैं. ट्रांसपेरेंसी की, यू हैव बीन ट्रांसपेरेंट, यू हैव बीन विद एवरीवन. अब ट्रांसपेरेंसी क्या होता है कि जब हम पब्लिकेशन को डालते हैं तो उसके जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसको डिफेंड कर रहे हैं. हमारे जो रिसर्च गाइड्स हैं हम उनसे कंप्लीटली, और हमारे जो एसोसिएट वर्कर्स है, को वर्कर्स है, उनके साथ में प्रॉपर डिस्कशन से हम पब्लिकेशन करते हैं, उनके कंसेंसस से, उनके परमिशन से हम कुछ कर रहे हैं, तो उसको हम ट्रांसपेरेंसी. ओके, न्यूट्रलिटी, you should not be in your publication, you should not focus on criticism. Okay, you should be neutral, you should not criticize anyone. Okay, but you should be open for criticism and debate. आप प्रेजेंटेशन में जाते हो, किसी ने आपके वर्क पे बोला कि अरे आपने ऐसा किया, आप ऐसा करते हो तो आपको ये रिजल्ट मिलता है, दैट इज अ पॉजिटिव कमेंट एंड यू शुड बी ओपन फॉर. ओके, किस कोई आके ये भी बोल सकता है अरे योर प्रोटोकॉल इज नॉट अप टू द मार्क, सो यू शुड be open to it, you should take it positively and see that protocol उसमें क्या up to the mark नहीं है, उसके अंदर उसका corrections करें और उसके आगे बढ़े. ओके, डिबेट के लिए ओपन रहे कि डिबेट जब भी आप करोगे, डिबेट से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे, आपको उसके पॉजिटिव साइड, उसके नेगेटिव साइड खुले मिलेंगे. ओके, जब भी आप ये फॉलो करते हो तो आपका पब्लिकेशन, आपका रिसर्च इंप्रूव होता है. तो यू शुड फॉलो, you shouldn't criticize others, but you should be open to open for criticism when it is related to your work. Okay,
and always and every time you should acknowledge the work of others and acknowledge the persons you have helped during your work. Okay, for example, I am taking a reference which has helped me, okay, while during the research कि मैंने ये particular antimicrobial का जो protocol है particular XYZ person से लिया है, okay, और वो XYZ person को मैं cite नहीं कर रहा और खुद का ही बोल के बता रहा, that is unethical, okay, it is wrong. Okay, you should have acknowledgement to the given person. कोई पर्सन होता है कि उसने आपको राइटिंग में हेल्प की है, ओके, अगर उसने राइटिंग में हेल्प की है तो उसको एक्नॉलेज करो. कोई पर्सन है किसी ने उसने आपको फंडिंग की है, ओके, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसने आपको फंडिंग की है तो उसको एक्नॉलेज करो. दैट इज द राइट थिंग शुड बी फॉलोड ड्यूरिंग योर पब्लिकेशन. ओके, the next part is that what are the errors which come in the scientific publication. ओके, ये तो हमने देखा कि व्हाट शुड बी फॉलो, लेकिन अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि क्या क्या गलत होता है या क्या क्या एरर्स आ सकते हैं. ओके, सो एरर्स इन साइंटिफिक पब्लिकेशन आर कैटेगराइज्ड अंडर 3 टाइप्स. फर्स्ट इज ऑनेस्ट मिस्टेक्स, others are errors which coming due to misconduct but it is not involving deception of data. The third category is errors of misconduct which is involving the deception of the data. Okay, honest mistakes ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब हम देखेंगे तो 1800s में the atom was said to be the basic particle for matter. Okay, matter is constituted of atom. फिर उसके बाद में कुछ सालों बाद में 1920s में जब आते हैं तो फिर बाकी साइंटिस्ट ने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है. ओके, फिर हम आते हैं 100 साल बाद आते हैं 2015 में आते हैं तो हमको पता चलता है कि नहीं 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 नहीं, there are certain bosons particle are also there, Higgs bosons are there which are more smaller particles. So it is not necessary कि एटम गलत था या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन गलत था या अभी जो हम बोल रहे हैं कि हिग्स बोसॉन पार्टिकल है वो गलत. हर चीज अपने जगह पे सही. ओके, इसका क्या मतलब होता है कि एट दैट टाइम whatever may be the available facilities, उस हिसाब से वो आदमी ने जो रिपोर्ट किया है वो उसके हिसाब से सही था. ओके, और वो बाकियों ने एक्नॉलेज वो टाइम पे किया तो वो सही. लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बाद में भी वही सही रहे. उसके अंदर फर्दर रिसर्च होता है तो हम उसके दूसरे एस्पेक्ट खुलते हैं. ओके, तो ये जो होता है दिस आर द ऑनेस्ट मिस्टेक्स. ओके, और ये मिस्टेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि देयर इज सर्टेन लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, देयर इज लैक ऑफ सर्टेन इक्विपमेंट्स. ओके, फॉर एग्जांपल एक ऐसा वेरी गुड एग्जांपल है कि जब साइनोबैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन अलगीज का क्लासिफिकेशन हुआ था, ओके, तो इट वाज इंक्लूडेड अंडर अलगी बिकॉज इट वाज कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो उसको हमने क्लासिफाई अलगी के अंदर किया था और अलगी के अंदर ही उसको कैटेगराइज किया था. लेकिन लेटर स्टडी शोड दैट द सेल टाइप in blue green algae is not similar to that of algal forms. The cell type is prokaryotic in nature and that's why now as per the Whitaker's 5 kingdom classification it is classified under Monera. Okay, तो वो क्यों हुआ है? क्योंकि उसके अंदर prokaryotic cell, though the prokaryotic cell is showing the characteristics of photosynthesis but it is not categorized under algae and different, it was classified later different. इसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसने उसको अलगी के अंदर क्लासिफाई किया था वो गलत था या बाद में जिन्होंने किया वही सही. इसका इंटरप्रिटेशन क्या है कि वो टाइम पे उनको जो सही लगा, जो बाकी कम्युनिटी ने, साइंटिफिक कम्युनिटी ने एक्सेप्ट कर लिया वो सही. बाद में उसमें फर्दर रिसर्च हुआ, फर्दर उसके अंदर टेक्निक्स डेवलप हुई तो हमको आगे की चीजें पता चली तो हम उसको क्या बोलते हैं, दीज आर द ऑनेस्ट मिस्टेक्स. अंडरस्टूड? आर यू विथ मी? हेलो? Yes, sir. ओके ओके, हाँ. सो दीज आर द ऑनेस्ट मिस्टेक्स. अदर मिस्टेक्स आते हैं जिसको हम मिसकंडक्ट के अंदर क्लासिफाई करते हैं बट इस मिसकंडक्ट में हम हमारा इंटेंशन गलत नहीं. ओके, मिसकंडक्ट हुआ है लेकिन हमारा इंटेंशन गलत नहीं. उसके अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं. वन इज नेग्लिजेंट वर्क, दैट वी आर फॉलोइंग नेग्लिजेंस इन आवर रिसर्च वर्क. फॉर एग्जांपल आपको कोई केमिकल बनाना है, आपको केमिकल, 1 सेकेंड, ओके,
नेग्लिजेंट वर्क कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल कि आई एम प्रिपेयरिंग अ सोल्यूशन. ओके, नाउ इफ आई एम डूइंग अ नॉन नेग्लिजेंट वर्क, आई एम डूइंग अ सिंसियर वर्क कि मैं सोल्यूशन बनाने के लिए डिस्टिल वाटर यूज करूंगा. ओके, और नेग्लिजेंट वर्क कर रहा है कि आई एम यूजिंग अ टैप वाटर फॉर मेकिंग दैट सोल्यूशन. तो अब क्या होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस? अगर मैंने डिस्टिल वाटर में दैट इट विल गिव मी प्रॉपर. इफ आई एम यूजिंग a tap water for my other, there are many possibilities for tap water. May it is hard water. Okay, it may have some contaminations or it may have some other particles. क्या पता कहाँ से कौन से सोर्स से आ रहा है. तो आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये तो है मिसकंडक्ट का पार्ट, लेकिन इसमें आप किसको गलत नहीं बता रहे. इसमें क्या हो रहा है कि हम नेग्लिजेंट, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने वो प्रॉपरली किया नहीं. ओके, और सेकंड होता है इनकॉम्पिटेंस. इनकॉम्पिटेंस क्या होता है कि आई एम वेरी गुड एट माई साइंटिफिक वर्क, लेकिन मुझे उसको मेरे लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखते नहीं आ रहा. मैंने किया तो बहुत है, रिजल्ट मेरे पास बहुत अच्छे, लेकिन मुझे लिखते नहीं आ रहा. तो ये इनकॉम्पिटेंस के अंदर आता है. इनकॉम्पिटेंस मीन्स आई एम नॉट एबल टू डू दैट. ओके, और माई राइटिंग इज वेरी गुड बट आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट इंस्ट्रूमेंट, सो हाउ कैन आई डू दैट. ओके, तो हम क्या करते हैं कि अगर इफ यू आर डूइंग, सो वन ऑफ द पार्ट इज साइंटिफिक राइटिंग. तो साइंटिफिक राइटिंग हमको आना चाहिए. हमको हमारा वर्क हम उसको प्रॉपर वे में, प्रॉपर लैंग्वेज में लिखते आना चाहिए. ये एक एथिकल पार्ट. ओके, देन देयर आर सम अदर मिसकंडक्ट पार्ट. ओके, दिस इज अनदर एरर पार्ट इन साइंटिफिक publication or in scientific publication which is involving deception. Means ये वो लोग होते हैं जिनको वर्क नहीं करना है लेकिन पब्लिकेशन करना है. तो वो क्या करते हैं? वो जो डेटा होता है उसको फैब्रिकेट करते हैं, गलत डेटा पुटअप करते हैं या किसी का डेटा चुरा लेते हैं. ओके, व्हेन यू आर फैब्रिकेटिंग समथिंग कि मतलब जो एक्चुअल वर्क मैंने किया नहीं लेकिन मैंने वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया. ओके, आई हैव नॉट डन एनी वर्क बट आई हैव प्रोड्यूस अ रिजल्ट, दैट कम्स अंडर फैब्रिकेशन. फॉर एग्जांपल, I have not prepared any solution, but while documenting it, while publication, I have written वो solution, I have prepared that solution by so method. But what is the proof that that is fabrication of data? मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया नहीं, लेकिन मैंने एक डेटा शीट बना ली. ठीक है, किसी की देख के कि हाँ ऐसा ऐसा डेटा शीट बनती है, उसको हम क्या इंक्लूड करेंगे? वो फैब्रिकेशन ऑफ डेटा होता है या फैब्रिकेशन के अंदर आता है. ओके, सेकेंड आता है फॉल्सिफिकेशन. सेकेंड फॉल्सिफिकेशन क्या है कि आई हैव डन अ वर्क, ओके, एंड माय रिजल्ट इज ए, बट इट इज नॉट टू द मार्क. और मुझे अच्छा पब्लिकेशन बनाने के, जब मैंने बाकी उससे उसका पब्लिकेशन देखा तो उनके सीडी आ रहे हैं, तो मैं एफ बता रहा हूँ. दैट इज फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा. आपका जो रिजल्ट है अगर आप वो नहीं दिखा रहे, दैट इज फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा. और थर्ड आता है प्लेजरिज्म. नाउ प्लेजरिज्म इज अ वेरी, you can say, very common topic nowadays. Okay, number of communities ना plagiarism आते हैं कि intellectual property rights जो प्रोजेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए IPR एक ethical committee बन गई है for the protection of intellectual rights. Okay, now plagiarism is when you are copying or taking a part of a different worker and you are not giving its proper acknowledgement or citation to that work, that comes under plagiarism. For example, while quoting or introducing, I have taken a part of something. Okay, मैंने बताया है कि इस चीज का ये रिपोर्ट हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैंने किसने रिपोर्ट किया है वो मेंशन नहीं किया, और मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा रिपोर्ट हुआ है, ये ऐसा आता है, वो मेरे नाम पे खपा देता हूँ, तो वो होता है प्लेजरिज्म. ओके, दैट कम्स अंडर प्लेजरिज्म. So these are the different errors which are coming during the scientific publications. Now there are different other parts which you have to study or see. फर्स्ट होता है कि आपके पब्लिकेशन के किस किस एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है. ओके, सो फर्स्ट इज ऑथरशिप. नो, ऑथरशिप क्या होता है कि आपने कोई अगर रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ा होगा या कोई बुक पढ़ा होगा, बुक का टाइटल पढ़ा होगा, तो बुक के टाइटल के नीचे लिखा होता है कि उसके ऑथर्स कौन. देयर मे बी अ सिंगल ऑथर, देयर मे बी मल्टीपल ऑथर्स. आप कोई रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते हो तो इमीडिएटली टाइटल के नीचे वर्कर्स के नाम होते हैं, डिफरेंट ऑथर्स के नाम होते हैं, उनके एफिलिएशंस होते हैं कि वो किस कहाँ से बिलोंग करते हैं. ओके, सो दैट इज ऑथरशिप. नाउ व्हाट ऑथरशिप क्या होती है कि whenever you do work, you don't do, work is not done by a single person, may be done by single person, may be done by multiple persons. Okay, the authorship is given to everyone who has participated in that work.
Okay, when that and on that work a publication is made, that is authorship. In other words, it is giving the credit, okay, who has been participated, who has done work on that particular research topic. Okay, deliberately इसमें अब प्रॉब्लम क्या आता है कि साइंटिफिकली या जो इंटरनेशनल बॉडीज होती है उन्होंने एक वे बताया कि ऑथर किसको कंसिडर करना है. ओके, तो ऑथर किसको कंसिडर करना है कि जिसने आपके वर्क में कंट्रीब्यूट किया. ओके, अब उसने कंट्रीब्यूट कैसा है, उसने कंट्रीब्यूट किया एक्सपेरिमेंटल वर्क में किया होगा, उसने कंट्रीब्यूट डेटा इंटरप्रिटेशन में किया होगा, उसने कंट्रीब्यूट आपका डेटा एनालिसिस में किया होगा, उसने अपने कंट्रीब्यूशन आपको राइटिंग में किया होगा. तो ये क्या होता है, ये होता है एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन. ओके, सेकंड इज ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग द आर्टिकल फॉर इंटेलेक्चुअल कंटेंट. ओके, वर्किंग इज डिफरेंट बट हाउ टू हाईलाइट इट, how to interpret or how to draft it so that it gives a larger message, it gives a big message to the community, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग बोलते हैं. तो ऐसा कोई वर्क होगा. ओके, जनरली क्या होता है कि the peoples in science or the peoples in arts, okay, हम कोई पर्टिकुलर वर्क करते हैं तो हमारी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इतनी इफेक्टिव नहीं होती. ओके, बट इफ आई एम टेकिंग अ हेल्प ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोफिशिएंट पर्सन who has proficiency in the language, तो वो क्या करता है, he will draft my words in a proper way. एक्सपेरिमेंट मेरा है लेकिन उसने जो ड्राफ्टिंग किया है it will give a good message और रीड करने में जिसको अच्छा लगता है, जो मुझे बताना है वही होता हो, मतलब निकल रहा है वो, अगर वो ड्राफ्ट करके कहता है वो भी ऑथर करके कंसिडर हो सकता है. ओके, देन अप्रूवल ऑफ द फाइनल रिवीजन. तो जो आपके फाइनल रिवीजन में भी अगर हेल्प करता है, तो स्टेप 1 कि मैंने ड्राफ्ट किया, स्टेप 2 मैंने किसी दूसरे से उसको करेक्ट किया, स्टेप 3 और आई सेकंड थर्ड पर्सन के जाता हूँ कि भाई अब इसमें आपको फाइनली रिवाइज करना है, तो उसको ग्रामेटिकली करेक्ट कर देगा वगैरह वगैरह, जो भी उसके अंदर चेंजेस करेगा, ही कैन आल्सो बी अ पार्ट ऑफ योर ऑथरशिप. एंड agreement to be accountable for the all aspects of the work which is related to the accuracy or integrity of any part of the work. For example, I have done an experimental work, लेकिन उसको जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जैसे इकोलॉजिकल स्टडी कर रहा है, मैंने सर्वे किया. ओके, मैंने पूरे फॉरेस्ट में घूम के ये निकाला है कि व्हाट आर द डिफरेंट नंबर ऑफ ट्रीज इन दैट पर्टिकुलर फॉरेस्ट, बट आई एम नॉट गोइंग टू असेस द कंप्लीट फॉरेस्ट. मैं क्या करूंगा कि जहां जहां पे वेजिटेशन अच्छा है और पार्ट में, ओके, आई विल सिलेक्ट अ क्वाड्रेट एंड आई विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम, एंड आफ्टर दैट आई विल चेंज द क्वाड्रेट, आई विल कलेक्ट द डेटा फ्रॉम. नाउ दैट इज वन ऑफ द पार्ट, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन, उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मुझे नहीं आता. तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक इस पर्सन की हेल्प लूंगा जिसको उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अच्छे से आता हो. तो सच, और उसने वो एक्यूरेटली किया है, उसने जो इंटरप्रिटेशन, जो मेरी वैल्यूज है उसको अगर पॉजिटिवली मुझे पुट अप करके दिया है, तो ही कैन आल्सो बी एन ऑथर इन माय पब्लिकेशन. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन ऑथरशिप. सी, कभी कभी क्या होता है, देयर आर सर्टेन घोस्ट ऑथर्स. ओके, there may be guest authors. Okay, the ghost authors और guest authors जो होते हैं, these are very much critical or dangerous in nature. तो ghost authors क्या होते हैं कि there are number of nowadays there are, अब जब से ये ऑनलाइन हो रहा है, हम जितना इंटरनेट पे डिपेंडेबल कर रहे हैं, और जब किसी को ये पता चल जाता है कि XYZ persons are not able to write properly, so क्या करते हैं कि there is a पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है. अगर आप देखोगे तो यू सेंड योर मैन्युस्क्रिप्ट टू अस एंड वी विल पब्लिश इट. ओके, यू सेंड मैन्युस्क्रिप्ट टू अस, गिव अस मनी एंड वी विल राइट फॉर इट. यू गिव योर रिजल्ट्स एंड वी विल मेक यू अ गुड पब्लिकेशन मैटर. तो ये क्या होता है, ये आपको कभी लिख के देते हैं लेकिन उनका नाम कभी नहीं आता. तो इसको हम क्या बोलते हैं, घोस्ट ऑथर्स बोलते हैं, है ना. घोस्ट कैसा होता है कि भूत कैसा होता है कि वो है लेकिन दिख नहीं रहा, उसको भूत बोलते हैं कि नहीं. तो घोस्ट ऑथर्स क्या होता है कि जिसने वो मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट करने में या उसको पब्लिश करने में, राइटिंग में हेल्प तो की है, लेकिन डिसऑनेस्ट हो. मतलब हमने यही एग्जांपल देखा है कि वो ऑथर बन सकता है, लेकिन अगर वो डिसऑनेस्ट वे में कर रहा है कि उसने आपसे पैसे लिए, तो ऑब्वियसली जिसने पैसे लिए उससे आप क्यों ना कुछ कराओगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन ऑफ माय कलीग एंड ही आस्क्ड मी टू राइट द मैन्युस्क्रिप्ट. ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ ठीक है, मेरे को तो 2000 दे दे, मैं तेरा मैन्युस्क्रिप्ट लिख के दे दूंगा. ऑब्वियसली अगर वो मुझे 2000 देगा तो उसके मैन्युस्क्रिप्ट में मेरा नाम तो डालेगा नहीं. ओके, वो
ऐसे जो ऑथर्स होते हैं जो पैसे लेके आपका कोई मैन्युस्क्रिप्ट बना के देते, उसको हम घोस्ट ऑथर्स बोलते हैं. नाउ घोस्ट ऑथरशिप इज नॉट अ रिकमेंडेड ऑथरशिप. ओके, घोस्ट ऑथरशिप नहीं होनी चाहिए. ओके, एक होता है गेस्ट. ओके, गेस्ट ऑथर्स होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस कि पर्टिकुलरली जब साइंटिफिकली आप जब प्रोफिशिएंट हो जाते हो, तो ऐसा है आपका क्लियर होता है कि हाँ वो पर्टिकुलर ऑथर का नाम डाल दो तो आपका पब्लिकेशन 100% एक्सेप्ट होता है. ओके, विच इज अ मिसबिलीफ. ऐसा होता नहीं है. ओके, अगर हो भी रहा है तो वो एथिकली करेक्ट नहीं है. देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड बट व्हिच आर नॉट एथिकली करेक्ट. ओके, वी डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वो गलत है, लेकिन हम चल तो रहे हैं ना वही रोड पे. सिमिलरली ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर ऑथर होता है कि वो सीनियर होता है, उसका नाम, उसके नाम पे ऑलरेडी कुछ होता है, और उसका नाम हम जब हमारे मैन्युस्क्रिप्ट में डालते तो हमारा मैन्युस्क्रिप्ट इजीली एक्सेप्ट हो जाए या उसका एक्सेप्टेंस रेट जल्दी हो जाए. तो ऐसा हो सकता है. और इन केस जब ऐसा होता है तो हमने जो वो पर्टिकुलर ऑथर का नाम डाला है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेस्ट ऑथर. ओके, और एक होता है गिफ्टेड ऑथर कि वो बोलता है हाँ विथ हिज कंसेंट, वो बोलता है कि हाँ मेरा नाम डाल दो आपका पेपर पब्लिश हो जाए. अब नाउ व्हाट इज कि उसने उसका दे दिया, उसको आपके पेपर में उसका नाम आ गया, उसको पब्लिकेशन मिल गया और आपका पब्लिकेशन एक्सेप्ट हो गया. सो उसको हम गिफ्ट ऑथर्स बोलते हैं. नाउ घोस्ट ऑथर्स, गिफ्टेड ऑथर्स एंड गेस्ट ऑथर्स आर नॉट रिकमेंडेबल. It is unethical to include the ghost author or a guest author or a gift author. Okay, this is a sign of dishonesty. This is a sign of unethicalness. We shouldn't do such practices. Okay, the next point which we have to see is about competing interests. Okay, now what is competing interest बोलते हैं कि competing interest जनरली आते हैं जब आपके किसी से फाइनेंशियल रिलेशनशिप होता है. ओके, कि पर्टिकुलर पर्सन है, उसने आपको फाइनेंस किया है वर्क करने के लिए, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है उसने आपको वर्क किया, फाइनेंस किया है कि यू परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंटल वर्क एंड आई एम गोइंग टू सी अबाउट द एक्सपेंसेस व्हाट आर. नाउ इट मे हैपन दैट ही इज एक्सपेक्टिंग सम डिफरेंट रिजल्ट एंड यू आर गिविंग सम डिफरेंट रिजल्ट. ओके, अगर रिजल्ट भी आ गया है तो उसका जो यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट हो सकता है. ओके, जनरली मोस्ट ऑफ द मूवीज में देखते हैं. ओके, एक पर्टिकुलर कोई बिजनेसमैन होता है कि वो आप रिसर्चर्स को पकड़ के लाता है और वर्क करवाता है. ठीक है, तब उनको पता नहीं रहता है कि भाई हाँ दे आर डूइंग रिसर्च. फिर उसको पता चलता है कि ये बॉम्ब बनाने लगा है, ये तो फोड़ने वाले. अतः फिर उसका एथिक्स जाग जाता है कि नो नो नो, आई विल नॉट अलाउ यू टू यूज दिस बॉम्ब अगेंस्ट एनीवन. तो फिर वो साइंटिस्ट बोलता है कि मैं आपको बॉम्ब फोड़ने नहीं दूंगा. वो बोलता मुझे तो फोड़ना है, मैंने तेरे को फंडिंग किस लिए किया. होता है कि नहीं. सो हम मूवीज में देखते हैं. सो दैट इज डिफरेंस इन इंटरेस्ट. ओके, एक ये भी हो सकता है कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट होता है, कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाएंगे. ओके, देयर विल बी सर्टेन रिलेशनशिप. ओके, पर्सनल रिलेशन होता है कि क्या मैं पर्टिकुलरली वो पब्लिक ऐसे जगह पब्लिशिंग हो रहा है जहाँ पे मेरा कोई पहचानता है. ओके, मैं क्या कर रहा हूँ कि अच्छा वो मेरा रिश्तेदार है तो उसमें डाल रहा, तो वो क्या करेंगे आपका रिलेशन है, ही विल एक्सक्लूड द मिस्टेक्स व्हिच हैव बीन फॉलोड इन योर जर्नल और इन योर रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट. तो वैसे भी होता है, दैट इज अनएथिकल एज वेल. ओके, तो अब इसको क्या होता है कि when you are not disclosing a relationship which may have poses about the competence, so that is the one which is comes under unethical or comes under the wrong or under the publication ethics. So वो कैसे होती है कि neglecting to a disclosure of a relationship with a person or an organization which affects one's objectivity or inappropriately influence of transactions. So this is an unethical action. सो आपने करना क्या है इस टाइम पे कि जब आप पेपर सबमिट करते हो तो उसका मेंशन करो कि दिस इज नॉट ऑफ माय इंटरेस्ट, कि इसका इंटरेस्ट किस किस से मैच होता है. आप इंडिकेट करो कि मैन्युस्क्रिप्ट सिंगल ब्लाइंड है, सिंगल ब्लाइंड जर्नल के लिए है, या टाइटल जो है वो डबल ब्लाइंड जर्नल है. ओके, इन्वेस्टिगेटर्स दे शुड डिस्क्लोज. मतलब ऐसा नहीं होना कि आपने कंसेशन देना है, आपके जितने भी ऑथर्स है, आपके जो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, आप के जो बाकी ऑथर से यहाँ पे हमें वर्क कर रहा है, उनसे आप कंसेंसस करो कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट सबमिटेड है इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट. ओके, दैट इज द वन ऑफ द थिंग यू शुड हैव while submitting your manuscript or while publishing your research article. The other is plagiarism. No, plagiarism is the one which is done at your level. ये आपके लेवल पे है और आप इसको 100% अवॉइड कर सकते हैं. लेकिन सबसे पहले हमको ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज प्लेजरिज्म. ओके, सो प्लेजरिज्म इज कि आप किसी का वर्क, किसी का सेंटेंस, किसी का पैराग्राफ
किसी का डेटा कॉपी करते और उसका रेफरेंस, उसको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं देते, उसको साइट नहीं करते, तो वो हो गया प्लेजरिज्म। ओके, फॉर एग्जांपल कि इफ आई एम गिविंग अ डायलॉग ऑफ पर्टिकुलर मूवी, ओके, और वो मूवी का डायलॉग है वो मैंने मेरे नाम पे चिपका दिया। ओके, जनरली ऐसा होता था कि मींस इन ओल्ड टाइम्स, नाउअडेज इट इज वेरी मच क्रिटिकल और इट इज नॉट जो जल्दी से पकड़ा जाता है, डिजिटल वर्ल्ड है। ओके, लेकिन ओल्ड इसमें ऐसा होता था कि मल्टीपल थिंग्स इफ यू विल सी, कि कुछ बॉलीवुड के जो चीजें वो हॉलीवुड ने कॉपी की, हॉलीवुड की चीजें बॉलीवुड ने कॉपी की, और उसका कहीं मेंशन नहीं। आज के टाइम पे वो होता है तो डायरेक्ट केस हो जाता है, यस और नो। तो ये होता है कि आपने वो चीज कॉपी की है विदाउट उसके परमिशन, विदाउट उसको क्रेडिट दिए, तो वो प्लेजरिज्म। ओके, आपको उसका वर्ड्स आप कॉपी करते हो, उसको अगर प्रॉपरली उसका मेंशन करते हो कि ये हमने इस पर्सन के इस मैन्युस्क्रिप्ट से लिया है, दैट इज नॉट अ प्लेजरिज्म। ओके, सो दैट इज थिंग यू शुड बी फॉलोइंग व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट, कि यू हैव टू व्हाटएवर यू आर डूइंग, आपको वो देखना है कि आप जो भी वर्क रेफरेंस के लिए ले रहे हो, आप उसका रेफरेंस अगर आपके इसमें ले रहे हो तो उसका प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट, उसका प्रॉपर मेंशन वहां पे होना चाहिए, उसको प्रॉपर क्रेडिट आपने देनी चाहिए। ओके, एक ऐसा भी होता है कि किसी का वर्क नहीं, मेरा ही ओन वर्क है, ओके, खुद का ही वर्क है, लेकिन वो पब्लिश्ड है और वो मैं कॉपी कर रहा हूं, तो दैट आल्सो कम्स अंडर प्लेजरिज्म। उसको नाम दिया गया है सेल्फ प्लेजरिज्म। सो इफ यू आर कॉपिंग योर ओन वर्ड्स, यू शुड साइट दैट आल्सो। ओके, यू हैव टू गिव रेफरेंस कि ये पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट में से मैंने ये लिया है, तभी वो कंसिडर होगा। तो यू शुडंट हैव टू मैन्युस्क्रिप्ट विद द सेम वर्डिंग्स। और अगर आपके खुद के भी मैन्युस्क्रिप्ट है तो आप आपके ओन मैन्युस्क्रिप्ट से भी वो लाइन नहीं ले सकते हो अगर आप उसको मेंशन नहीं करते, सो दैट कम्स अंडर सेल्फ प्लेजरिज्म। ओके, सो अब इसके टाइप से प्लेजरिज्म के कौन से टाइप्स आते हैं, उसमें हमने क्या प्रॉब्लम आता है और हमने उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज लिटरल कॉपी। Okay, what are we doing? We are reproducing a work word to word in a whole word without the permission and acknowledgement of the original source. Okay, so it is unethical, and that means that literal copying is only accepted if you reference the source and put quotation marks around the copied text. For example, if I am taking a definition, ओके, नॉट डेफिनेशन तो चेंज होने वाली नहीं है, तो मैं उसको क्या करूंगा, कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा में एज इट इज वो डेफिनेशन अगर कॉपी करूंगा और वो किसने दी थी उसका नाम अगर मैं सामने लिखूंगा, तो वो प्रॉपरली एथिकल वैल्यू है, तो वो मैं एज इट इज वैसा कॉपी करूंगा। अगर उसमें से मैंने कोटेशन मार्क्स निकाल दिए, वो भी गलत है। अगर मैंने वो जो ऑथर है उसका नाम गायब कर दिया, वो भी गलत है। ओके, सो व्हाट आई शुड डू व्हाइल डूइंग सच थिंग्स, कि आई शुड कीप ट्रैक ऑफ द सोर्सेस who used while researching and where you used it in your paper. Make sure that you fully acknowledge and properly cite the original source of in your paper. Use quotation marks around word for word text and reference properly. Okay, second part or the second thing which comes under plagiarism is substantial copying, which includes research materials, process, tables or equipment. आप क्या कर रहे हो कि उसका वर्क जैसा का वैसा कॉपी कर ले रहे हो, उसकी जो रिजल्ट है वो कॉपी कर ले, टेबल्स कॉपी कर लिया, उसके मटेरियल मेथड्स कॉपी कर लिए, तो वो प्लेजरिज्म में आ जाता है। ओके, नाउ सब्सटेंशियल वर्ड गिव दैट इन बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी यू हैव कॉपीड। ओके, सो इन सच वे इट विल गिव यू अ negative impact, it will take your manuscript into a negative direction. So what you should do, you should ask yourself if your work has benefited from the skill and judgment of the original author. So while discussing in your research manuscript, you should put his proper values, you should give him proper credit so that it can be properly assessed. Okay, third, the degree to which you answer will indicate that whether substantial copying has been taken place. If the answer is at the minimum level, कि अगर वो no होता है तो वो ethically correct है, अगर वो yes है तो वो ethically wrong. So आपको properly किसी के भी values as it is copy करना allowed नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए. Okay. Third one is paraphrasing. Now what we do, कि हमने उसके वर्ड्स कॉपी कर लिया और उसको तोड़ मरोड़ के एक दूसरा सेंटेंस बना लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैराफ्रेजिंग। सो आइडिया किसी और की, मैंने उसको तोड़ा मोड़ा जोड़ा और खुद की इसमें लगा दिया। ओके, सो इट इज रिप्रोड्यूसिंग समवन एल्स आइडियाज
You have not copied any word. You have taken its idea, but without his permission and acknowledgement, you have given a different sentence to it. That is paraphrasing. So it is only acceptable if you properly give reference to the source and make sure that you do not change the meaning of the what was intended by the source. Then and only then paraphrasing is allowed. Okay. So what you should do while writing, make sure that you understand what the original author means. उसका meaning to meaning आपका proper आना चाहिए. Meaning change नहीं होना चाहिए अगर आप wording भी change कर रहे हो. Okay. Never copy and paste the word that you do not fully understand. आपको नहीं समझ रहा है तो उसको copy paste नहीं करना. Okay. Think how the essential idea of the source relate to your own work until you can deliver the information to others without referring to the source. And compare your paraphrasing with the source to make sure you retain the intended meaning even if you have changed the words. Okay. Next आता है text recycling. Now text recycling is reproducing portions of an author's own work in a paper and resubmitting it for publication as an entirely new paper. For example, I have published a work. ओके और मैं क्या करता हूँ उसमें का एक पैराग्राफ लेता हूँ और मैं दूसरे नए पेपर में डाल देता हूँ, तो वो क्या हो गया, मैं सेम टेक्स्ट को रिसाइकल कर ना. अब आप बोलोगे कि सर ये दूसरे ऑथर का वर्क नहीं है, आपने खुद का ही, मैंने अगर खुद का ही वर्क लिया है तो वो पैराफ्रेजिंग में या प्लेजरिज्म में कैसे आएगा. ओके, इट इज दैट वंस आपका एक पैराग्राफ पब्लिश हो चुका है, आपके वो वर्ड्स पब्लिश हो चुके हैं, तो आप उसको डायरेक्टली कॉपी, तो वो आपकी है, आपको खुद को ही साइट करना जरूरी या उसके थोड़े वर्डिंग्स चेंज करना. ओके, or you have to construct altogether a new paragraph or new lines so that you can use. You cannot use the exactly without citing. Okay, so put anything in quotes that is taken directly from a previously published paper. अगर आपको जैसा का वैसा कॉपी भी करना है तो उसको क्या करना है, आपको कोट्स के अंदर डालना. It may be inverted commas, it may be in brackets, etc. Okay, and make sure the reference of the source is given accordingly. आपने जहां से वो लाइंस लिए हैं उसका आपने रेफरेंस देना है. अगर आपके वो बुक में से है, आपके प्रीवियस पब्लिकेशन से है या किसी और प्रेजेंटेशन से, तो आपको वो वहां पे प्रॉपरली कोट करना है, आपको प्रॉपरली रेफरेंस देना. ओके, दैट शुड बी फॉलोड. देन देयर कम्स द साइमल्टेनियस सबमिशन. अब साइमल्टेनियस सबमिशन क्या होता है कि देयर इज अ सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट व्हिच आई हैव प्रिपेयर्ड एंड आई हैव गिवन इट टू टू डिफरेंट जर्नल्स एट द सेम. और प्रॉब्लम कब आएगा कि दोनों ने वो पब्लिश कर दिया साथ, तो ये क्या हो गया, साइमल्टेनियस सबमिशंस. अब दोनों में से क्या होगा कि दोनों जर्नल्स ने अगर वो सेम मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिश कर दिया तो दोनों जर्नल्स को रिजेक्ट कर देंगे. ओके, समझ रहे हो. और सेकंड होता है डुप्लीकेट और मल्टीपल पब्लिकेशंस. इट ऑकर्स व्हेन टू और मोर पेपर्स विदाउट फुल क्रॉस रेफरेंस दे शेयर द सेम हाइपोथेसिस, द सेम डेटा, द सेम डिस्कशन पॉइंट्स एंड द सेम कंक्लूजन्स. बस हमने क्या किया है, उसका टाइटल वाइटल चेंज कर दिया, थोड़ा उसका वर्डिंग्स चेंज कर दी, तो वो थोड़ा दिखने में अलग होगा लेकिन होगा वो डुप्लीकेट. सो these two types of submissions are not allowed during your publication. Okay, this doesn't comes under the good rules of publication ethics. तो आपने क्या करना चाहिए कि you should never submit a single paper in two different journals at the same time. आप एक जर्नल में करो, उसकी पूरी प्रोसेस फॉलो होने दो. अगर वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक, रिजेक्ट करता है तो ठीक. ओके, अगर वो रिजेक्ट करता है तो उसको दूसरे पब्लिशर के पास डालो, दूसरे जर्नल. दैट इज द प्रॉपर प्रोटोकॉल. अनलेस एंड अनटिल आपके एक ने उसका प्रॉपरली उसको एक्सेप्ट किया है, नहीं किया, उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता, तब तक उसको दूसरे जर्नल में डालना नहीं है, और साथ में तो बिल्कुल नहीं डालना. ओके, सेकंड इज डुप्लीकेट पब्लिकेशन. Duplicate publication, that means you have copied your own data. You should not do anything like that. आप जब भी कर रहे हो तो खुद का डेटा तो कॉपी करना, दूसरे का भी नहीं करना है और खुद का भी नहीं करना. If you want to make a good researcher of yourself, आपको खुद एक गुड रिसर्चर बनना है तो फिर से वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, उसके अंदर कुछ नया एस्पेक्ट एक्सप्लोर करो और फिर उसको पब्लिकेशन. ओके, नेक्स्ट इज रिसर्च फ्रॉड. अब रिसर्च फ्रॉड क्या, इट इज क्लासिफाइड अंडर फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन. नाउ FFP, fabrication, falsification and plagiarism are the three grave mistakes of a publication. ओके, ना आपको प्लेजरिज्म करना है, ना आपको फैब्रिकेशन करना है, ना आपको फॉल्सिफिकेशन करना.
So fabrication क्या होता है? It is making up research data and results and recording or reporting that. Means without doing any research, I have generated some research data. Okay? बिना किसी कोई एक्सपेरिमेंट के मैंने एक डेटा बना दिया और मैं उसको पब्लिश भी कर रहा हूँ. ये हो गया फैब्रिकेशन. दूसरा होता है फॉल्सिफिकेशन, दैट इज मैनिपुलेटिंग रिसर्च मटेरियल्स. मींस फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी. अब उसका जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हम चेक करते हैं तो उसका जोन ऑफ इनिबिशन आता है. ओके, अब ये जोन ऑफ इनिबिशन आने के बाद में वो अप टू द मार्क नहीं है. मुझे नहीं लग रहा जोन ऑफ इनिबिशन पर्टिकुलर प्लांट मटेरियल का या नैनो मटेरियल का नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ उसको फोटोशॉप में डालता हूँ और वो वहाँ पे जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट कर देता हूँ. तो दैट इज फॉल्सिफिकेशन ऑफ डेटा. आपका जो डेटा नहीं आया वो आपको अगर सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हो तो फॉल्स है. ओके, तो इससे क्या होता है कि जब वो एक्सपेरिमेंट कोई और रिपीट करेगा तो उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और वो जब उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो बोलेगा, वो अगर रिपोर्ट कर दिया उसने कि दिस इज नॉट द वे दैट इज बीन, सो दैट जर्नल विल रिट्रैक्ट योर पब्लिकेशन, दैट publishing house will retract your publication. Okay, recently there is a journal book. Okay, there is journal group, I will not mention the name. अगर आप न्यूज फॉलो करते हैं कि उनके इसमें से okay, it is a publishing house, उनके इसमें से 3260 जर्नल्स रिट्रैक्ट हुए हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर मेथड पब्लिशिंग के टाइम पे फॉलो नहीं किया. नंबर में वेरी है क्या, एग्जैक्ट नंबर थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतने रिसर्च आर्टिकल्स उन्होंने रिट्रैक्ट किए. क्यों किए? क्योंकि उसके अंदर बाद में पता चला है, पब्लिश होने के बाद में ये पता चला कि उन्होंने फॉल्स डेटा फैब्रिकेट किया है, उन्होंने कुछ गलत डेटा डाला है और वो ऑथेंटिकेट नहीं. तो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि इन साइंटिफिक कम्युनिटी, ऑन साइंटिफिक रिकॉर्ड इन द साइंटिफिक बुक्स, योर नेम विल कम अंडर हिट लिस्ट, योर नेम विल कम अंडर ब्लैक लिस्ट. आपका नाम अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जैसा होगा. ओके, आपको IMF फंड नहीं दे रही है, आपको वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं दे रहा है, कोई आजू बाजू देश मदद के लिए नहीं है, आपका नाम खराब हो गया. ओके, ये होता है कि अगर आपका वर्क ऑथेंटिकेट है तो आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है, आपको हेल्पिंग हैंड ज्यादा मिलेंगे, आपसे कोलैबोरेशन ज्यादा होंगे, आपका क्वालिटी ऑफ रिसर्च इंप्रूव होगा. और इस क्वालिटी पब्लिकेशंस के बाद में जब आप अप्लाई करने जाओगे किसी फंडिंग के लिए तो वो फंडिंग एजेंसी भी आपको फंड प्रॉपरली करे. ओके, सो you should neither manipulate your data, you should not manipulate your data images. जो है सो है बताना है. ओके, okay, so you should never manipulate your data and you should never manipulate the data images. जो है authentically वही put up करना है. अगर if you are not getting a result of a particular work, repeat that experiment. Okay, that is what you should follow, but you should never fabricate it, never manipulate it. जो है वही बताना है, जो नहीं आया उसको रिपीट करना है और फिर उसको प्रॉपरली, कुछ गलती होगी उसको रेक्टिफाई करके हमको रिजल्ट्स मिलने चाहिए. रिजल्ट्स मन से या किसी क्या बोलते हैं कि हाँ ये ऐसा डाटा है उसका वैसा आया है और मैंने उसको अज्यूम करके मेरा डेटा बना दिया, ऐसा नहीं करना. ओके, अंडरस्टूड? ओके, सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिकेशन एथिक्स. पब्लिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? कि सबसे पहले कि आपका अगर रिसर्च आपने एथिकली फॉलो किया है, आपने जो पब्लिश किया है वो एथिकली किया है, तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी का नॉलेज बढ़ा रहा है. ओके, वो एक नया एस्पेक्ट साइंस का खोल रहा है. आपको वो फैब्रिकेट इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि इट इज गोइंग टू बी अ रेफरेंस फॉर मल्टीपल पीपल्स. अगर आपने वो मिस रिप्रेजेंट किया है तो वो जो कंसेप्ट है वो गलत साबित हो जाए. ओके, सो योर वर्क शुड बी ऑथेंटिकेट. Second, it promotes the values that are essential for working collaboratively. It creates mutual respect, okay, and it creates trust on you so that you can collaborate with other ones. Okay, you should be accountable to the public. ये दिमाग में रखोगे तो ही आपका पब्लिकेशन एथिक्स फॉलो हो जाएगा कि आपको ये आंसर करना है पब्लिक को, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पब्लिक को प्रॉपर वर्क आप रिप्रेजेंट करें. और पब्लिक कौन भी हो सकता है, साइंटिफिक कम्युनिटी, जो भी आपके रेफरेंस में आ रहा है. ओके, फॉर इट इज द पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज द पॉइंट ऑफ ट्रस्ट, इट इज द पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके, सो इट also helps to build up the support for research.
आपका पब्लिकेशन अच्छा होगा तो आपकी कोलैबोरेशन अच्छे होंगे, कोलैबोरेशन अच्छा होगा तो क्वालिटी ऑफ रिसर्च बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ रिसर्च बढ़ेगा तो डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज आपके रिसर्च को फंड करेंगे, और फंड करने के बाद प्रोबेबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि वो पब्लिक डोमेन में बहुत जो है हेल्पफुल हो और आपको नोबेल प्राइज भी मिल सकता है, ठीक है नहीं। और ये नोबेल्स क्या मिल रहा है, सबको रिसर्च को मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने वर्क किया है, उन्होंने ऑथेंटिक वर्क किया है। ओके, so what are the roles and responsibilities of authors while publishing? So first कि आपने आपके मैन्युस्क्रिप्ट को बार बार चेक करना है, आपने आपका डेटा एक्यूरेटली पुटअप किया है, आपने आपके डेटा को मिस इंटरप्रेट नहीं किया है, उसका प्रॉपर एनालिसिस किया है, प्रॉपर कैलकुलेशंस किए, ये आपको चेक करना है। सेकंड, आपको ये इंश्योर करना है, आपको वेरीफाई करना है कि आपका जो रिसर्च है वो एथिकली है या नहीं, इट इज एडहर टू द रिलेवेंट रेगुलेशंस और नॉट। ओके, you must always follow the regulations of academic journals which are given in peer reviewed journals, editing or publishing house. Okay, you should submit manuscripts which are original and not submit the same paper to more than one academic journal. That is also your responsibility. Okay, so date author should submit the data, regulation, procedures, software, lab notes or other information promptly when requested to the editor. और ये तब आप कभी दे सकोगे जब आपने वो एक्चुअली ओरिजिनल वर्क किया है। अगर आपने ओरिजिनल वर्क नहीं किया होगा तो आप वो प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। ओके, रिसर्चर मस्ट ऑलवेज रिकॉर्ड द प्रोसीजर एंड रिजल्ट्स फेथफुली एंड सिस्टमैटिकली एंड स्टोर देम एज एन एविडेंस ऑफ योर रिसर्च। ओके, दैट इज योर रिस्पांसिबिलिटी एज एन ऑथर। सो व्हाई यू शुड फॉलो publication ethics? First, it ensures your scientific process. Okay, it is ensuring your scientific process. Now, truth is the foundation of science and progress of ideas. If it is quoted truthfully, then and only then it will be continued further. आप किसी कम्युनिटी में अगर ट्रूथफुल हो तो आप थ्राइव कर सकते हो। अगर आप फॉल्सिफाई या आप किसी झूठ पे आधारित हो, आप वो सर्वाइव नहीं कर पाओ। कुछ टाइम के लिए आप सक्सेसफुल लोगों को दिख भी सकोगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन यू विल नॉट बी एक्नॉलेज्ड। सेकंड, इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ एंड द प्लैनेट। ओके, एथिकल पब्लिकेशन अगर आप करोगे तो वे इंश्योर करेगा कि आप ट्रस्टफुल इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, आप अगर ट्रस्टफुल इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आगे जाके बनने वाली थेरेपीज, आने वाली टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज उस वर्क पे डिपेंड करेंगे। ओके, जब टेक्नोलॉजी नहीं आपके वर्क पे डिपेंड करेगी तो आप नेचुरली लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर कुछ पॉलिसीज बन रहे होंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट तो आप प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर। ओके, नेक्स्ट, इट प्रमोट्स एथिकल बिहेवियर। एथिकल बिहेवियर का होगा कि जब आप करेक्टली कुछ पुट अप करोगे तो ये आप पॉजिटिवली हर एक को ये मैसेज दे रहे हो कि यू शुड गिव योर ओन रिसर्च। ओके, व्हेन यू विल पब्लिश योर वर्क एथिकली, इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, इट विल बूस्ट अप योर वर्किंग एनर्जी, इट विल बूस्ट अप योर वर्किंग पोटेंशियल कि हाँ, मेरा वर्क अगर इस वे से प्रॉपरली प्रोटोकॉल फॉलो करने से पब्लिश हो रहा है तो मे बी अगले बार जब मैं वर्क करके बोलूंगा ये मुझे हायर इम्पैक्ट फैक्टर के जर्नल में भी मिल जाएगा। मेरा वर्क अगर वर्ल्ड वाइडली एक्नॉलेज हो रहा है, मुझे साइटेशन मिल रहा है, मतलब आई एम ऑन द राइट ट्रैक। ओके, सो इट इंप्रूव्स योर रेपुटेशन एज एंड और कुछ नहीं। अगर हम ये चारों बात को इग्नोर भी कर दे तो हमको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि इट इज द ओनली वे। ओके, ऐसे ही इफ यू आर डूइंग अ पब्लिकेशन, इफ यू आर डूइंग अ रिसर्च, इट शुड बी एथिकली करेक्ट, देन एंड ओनली देन it is research, but other than that it is not research. So if you are doing research in any field, any stream, any discipline, you should always follow the publication ethics, you should always follow the research ethics. Okay, so these are the references which I have been taken for preparation of the presentation. Okay, so that's for your next. So make it a promise to yourself, okay, and the coming generation that publish your work ethically. Okay, that's all from my side. Thank you for your attention. I am also thankful to Dr. Vishal Marathe sir for giving me the opportunity to express my views here, and I am thankful for the organizing committee for organizing this online session of the research methodology or the coursework which is mandatory. Okay, thank you. Okay, thank you, Abhimanyu.
Now the topic is open for discussions. Participants, if you have any difficulties, please ask. काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. Yes. आहेत का काही? Okay, I think there is no questions. So thank you, Dr. Abhimanyu Maheshwari, for sparing your valuable time for our students. It's really pleasure listening to you, and I must express my gratitude towards you for your valuable lecture. So thank you very much on behalf of Research Committee, Science College Nanded. Thank you. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay. So I think we will stop here, right? It is a time for lunch break. So